एतमाद और यकीन के साथ, एक जज्बे के साथ कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, हो जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। जी हाँ, क्या किसी ने खूब कहा है, जो चला जाता है वही बचता है, और जो आपके पास होता है वो इसी दुनिया में रह जाता है। अस्सलामु अलैकुम, मैं अदनान ज़ीशान दिल की गहराइयों से आपको खुशामदीद कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ आपके जज्बे को, जिसकी वजह से आप यहाँ पे जमा हुए हैं, इस पैगाम के साथ कि वतन की मिट्टी गवाह रहना, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं गवाह रहना। जी हाँ, हम सब मिलजुल कर कतरा कतरा जमा करके लोगों की उम्मीदों की किरण और जिंदगी की शमा को रोशन कर रहे हैं। May Almighty bless your efforts to support the humanity, the cause that you are contributing. May Allah reward you numerous bounties, not only in this world, but the success in the world hereafter. Assalamu alaikum. Now I would like to pass on the mic to the better MC, Miss Rahila, my co-host. Better? Okay. Assalamu alaikum everyone, and welcome to Shaukat Khanum Cancer Hospital Fundraiser 2023 Calgary chapter. My name is Rahila Jamil, and I stand before you today with a heart full of gratitude and excitement as we gather here for this incredible humanitarian organization that has been saving lives of underprivileged cancer patients since 1994. To live a life surrounded by difficulties and poverty can be very overwhelming, and to see a loved one being diagnosed with cancer can be excruciatingly painful. At Shaukat Khanum hospitals, we understand the distress, the despair, the trauma that comes with it, and we are committed to ease this burden for families and for patients. For nearly 30 years, Shaukat Khanum Cancer Hospital and Research Center has been a ray of hope for those suffering with cancer. Our donations and zakat enable the hospital to support, to provide world-class modern treatment, and to transform lives. Together, we can make a difference that will last a lifetime. I would like to extend my heartfelt thank you to each and every one of you. Your presence, your support, your generosity has always made our events a huge success. So on behalf of my Shaukat Khanum Calgary team, thank you Calgary. Thank you so much for your love, for your care, for your unyielding support, and for your generosity. Thank you. Thank you so much. Thank you. Allah said in Quran, and whoever saves a life, it is as though she had saved the life of all mankind. It is exactly why we have gathered here tonight. Indeed, your donation means life. Now I would like to call upon Sheikh Noman for the recitation and translation of Quran. Sheikh Noman is a Hafiz and is the founder of Al-Ansar Foundation. He has a thorough research understanding of Arabic, fiqh and tafsir along with the hadith. So, Sheikh Hafiz Noman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق رواه البخاري. In the ayats that I have recited in front of you, Allah subhanahu wa ta'ala says that the light of Allah subhanahu wa ta'ala extends the heavens and the earth. And this light is of such nature that it guides whomever Allah subhanahu wa ta'ala wants to guide. And it takes away, it leads a person towards misguidance. Who wants to be misguided? A person who wants to be misguided, that person, Allah will misguide such a person. And Allah, what is this guidance that Allah subhanahu wa ta'ala talks about? What is this guidance? What is this light that Allah talks about? This is the pathway towards deen, the different pathways that are there. The different pathways that are there, this is that light. The ilm of Nabuwwah, the knowledge that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam came with. There are two aspects to this knowledge. One is the aspect of ibadat, which is worshipping Allah subhanahu wa ta'ala, our salah, our qira'ah, and different aspects of ibadah. Then the other aspect of this is mu'asharat. How we conduct ourselves. How we conduct ourselves in society, this is the other aspect. And this aspect of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's life, this aspect in particular was there even before he had wahi. Even before he had wahi, this aspect was in the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam had the first wahi, Jibreel alayhi salam came to him and he said, Iqra, recite. And he held him tightly. He held him very tightly. And Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam was scared at this moment. He was worried what was happening to him. He's seeing a creature that's not from this world. A creature that's from a different world. He's seeing that and he's worried. And he says, Ma ana biqari'in. Ma ana biqari'in. I am not a reciter. I don't know what you want me to recite. So anyways, this happens few times, then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recites, and then he goes back to Khadija radiyallahu anha. And this is a part I want you guys to pay attention to. He goes back to Khadija radiyallahu anha. And when he's back with Khadija radiyallahu anha, and Khadija radiyallahu anha looks at him and he's worried, he says, Zammiluni, cover me. So Khadija radiyallahu anha covers him and then she consoles him. And what does she say to him? She doesn't talk about the ibadat that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did. But rather what she talks about is Allah will not destroy you. And then she starts giving reasons why Allah is not going to destroy him. And she says, you're a person who keeps good kin with people. You're a person who's good with their relatives. You're a person who's good with their friends. You're a trustworthy person. You're a trustworthy person. So Allah is not going to waste you. Then the second thing she says to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is that
When there's someone who's in need, when there's a destitute person, you are always there to help them. You're always there to help them. So Allah is not going to waste you. And all of the things she mentioned, they had to do with character. Today when we look at our character, when it comes to our relatives, it comes to our friends, sometimes we don't speak with them for years. Sometimes we don't speak with our Muslim brothers for years. When it comes to being kind with others, our character, when it comes to ibadat, we're a lot better than when it comes to our character. Our characters are a lot weaker than our ibadat. Our characters are a lot weaker than our ibadat. This is why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ. I came to this earth for the purpose of rectifying. Rectifying what? Akhlaq, character. I came to rectify character. And there are countless narrations in this regard. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam brings countless narrations. The greatest humanitarian that was there was Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There is no humanitarian better than Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. When it comes to teaching people humanity, it was Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam who taught humanity. So the first place where we look for to find humanity within us is in the life of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. There was this woman from the Bani Israel, and she didn't have a good character. She didn't have a best of character. She was an adulteress. She used to commit adultery. One day she saw a dog, and this dog was thirsty. This dog was thirsty, and her heart became soft in that moment. So she fed this dog. She gave some water to this dog. And through this, Allah subhanahu wa ta'ala had this woman enter into Jannah. Just through this. Such a small action, but the ikhlas behind that action, the sincerity behind that action was something else. The sincerity behind that action was something else. So she entered into Jannah. So today when all of you are here, have that ikhlas, have that intention that we're doing this only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. We're doing this only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever we get here, it's only for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah could be pleased with every single one of us. Aisha radiallahu anha, once a man came to Aisha radiallahu anha's house, and he was a beggar. He was asking for some food. Her servant opened the door, Badira. And she opened the door and she said, we don't have anything. Aisha radiallahu anha came by the door. She said, who is it? She said, it's a beggar. She said, call him back. Call him back. She's like, but we don't have anything to give to him. We only have a little bit of barley with which you're going to open your fast with. She said, give him that. Allah will send something better. Allah will send something better. And Barira radiallahu anha, she said, I couldn't believe it at that moment. But when she opened her fast, she prayed her Maghrib Salah, a man came which we did not expect him. We did not expect him to do any kind of good action. This man came and he brought a whole goat for us to eat. So when we do something for Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will do something for us. Like the hadith mentions that 2 angels daily they come down. 2 angels daily they come down to this earth. They come down to this earth. One of the angels says, Allahumma a'ati munfiqan khadafan. Ya Allah, this so and so person, what do so and so person? He spent in your cause. He spent in your cause, so increase in his wealth. Increase in his wealth. And on the other hand, the other angel, he comes, and what does he say? Ya Allah, this so and so, when the time came to spend, he had the money, she had the money, but they wanted to hoard it. So Ya Allah, destroy this person's wealth. Destroy this person's wealth. So from the apparent, it seems like we're losing money. But in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, we are gaining money. And at the end of the day, the greatest investment is with Allah subhanahu wa ta'ala. So, may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the tawfiq to act upon what has been heard. May Allah subhanahu wa ta'ala grant ease for all those people who are going through difficulty throughout the world. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant cure to all those people. Wa akhiru da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen.
May I have everybody please rise for the national anthem of Canada and Pakistan. I would like to introduce to you a remarkable individual who has not only achieved great success in his professional life, but has also dedicated a significant portion of his resources and time to make a positive impact on the lives of those less fortunate. A doctor by profession, he is extremely humble, organized, passionate, modest, down to earth, approachable, always willing to lend a helping hand and a listening ear, devoted. Honestly, I can go on and on. The whole team adores him. I would like to invite Dr. Amir Aslam, the chair of the Friends of Shaukat Khanum Calgary chapter, to join us on the stage to welcome you all. Dr. Amir Aslam. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you for your kind introduction. I'm not sure I deserve all those words. Ladies and gentlemen, boys and girls, and honorable guests, Assalamu alaikum. On behalf of Shaukat Khanum Calgary team, I welcome you all to Shaukat Khanum Fundraising Event Calgary 2023. I would like to give a special thanks and welcome to Honorable Minister of Immigration and Multiculturalism, Mohammad Yasin Sahab, Directors of Shaukat Khanum Hospitals who travel all the way from Pakistan to join us here, Dr. Asif Loya,
He will update us about Shaukat Khanum Hospital's projects. SERF representative Murtaza Ansari Sahab and esteemed community leaders, well-wishers and donors. I welcome you all and I'm very thankful that you have taken time out to join us tonight for a very noble cause. Cancer treatment is very expensive. We are fortunate enough to live in a country like Canada where we have accessible healthcare free of cost. Shaukat Khanum is the only hope for poor and needy cancer patients in Pakistan. 75% of patients who attend Shaukat Khanum receive free cancer treatment because they cannot afford the treatment. It's only possible with your donations. Joint Commission International USA is the highest body to assess the excellence in quality of care and services to the patients. I am proud to say that Shaukat Khanum hospitals have been accredited by JCI with gold seal continuously for the last several years. It ensures that each dollar which you have donated is spent well. Please donate generously. No donation is small. After Shaukat Khanum, Lahore and Peshawar, the third largest hospital is under construction at Karachi. Shaukat Khanum need more funds than ever before. You could donate any dollar from $1 per brick to a founding stone of $6,800, and it could be a name plaque for you or your loved one, and it could serve as a sadaqah jariyah. Your donations are tax deductible and zakat applicable if you indicate. In the end, I would like to thank each and every member of organizing team and volunteers who worked very hard to bring this event together. A special thanks to SERF Canada, Murtaza Ansari Sahab, and whole team of volunteers and organizers of Calgary team. However, I would like to mention one name, Dr. Tariq Awan. He is always with me and guided the whole team and myself to bring this event together. Thank you. I'm also thankful for my better half, Dania, and my kids, Hassan, Sarah, and Zain, that they have given their time to me that I could serve for the volunteer work with this great organization, Shaukat Khanum. Thank you. मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्पॉन्सर्स का, हर साल की तरह इस साल भी कार खैर में हिस्सा डालने का। मैं तहे दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके जान, माल और रिस्क में इजाफा अता फरमाए। Indeed, all sponsors are pillars of this foundation. Now I would like to call the names of our this year sponsors by categories. Gold category, Prime FX Mr. Omar Azim. Silver, Fahad Restaurant Mr. Ghulam Rasool. Bronze category, AMFJ Business Solution. Wajahat Firoz, Realtor. Althador Law, Mr. Shiraz Chaudhary and Atif Ali. My financial doctors, Mr. Maqsood Sumro. Northeast Fast Sign, Mr. Ahmed Zain and Kulsoom. And Canadian Pizza Unlimited, Mr. Jannat Hussain Shero. A special thank and shout out to some of the other contributors of this event. Mariam Marizi Photography, who has served not only this organization but others.
with true heart and effort. Northeast Fast Sign with banners, they have provided us the banners last year and this year free of cost. PCF Board of Directors, who has given us the facility that we can conduct our routine meetings to coordinate and organize this event. Fahad Restaurant, Mr. Ghulam Rasool, for providing us subsidized rates and tasty food. Sur Sangam Radio interviews that has been conducted by Mr. Rana Satwat and Wahaj Feroz. One and the only Mr. Abid Khan, who does social media for this foundation. And last but not the least, thank you very much, Calgary Red FM, or Voice, another channel, another radio channel of Calgary. Please put your hands together to give a warm applause to all these members and contributors of this community. I'd like to take a moment to recognize and appreciate the dedication and hard work of the volunteers, organizers, and all those who have put in their time and effort to make this event possible. I'm going to name some people who bought the tables, and all the tickets went fast. In fact, we were sold out. So I'll make this really fast. Farad Haidri, Hafiz Azhar Rafiq, Burhan Khan, Abid Khan, Nasir Adil, Dr. Tariq Awan, Saqib Qureshi, Muhammad Hafiz Malik, Adnan Zishan, Imtiaz Ahmed, Kabir Chaudhry, Mazhar Malik, Dr. Amir Aslam, Shabana Shehzad, Dr. Samina Bajwa, Rana Satwat, Shaukat Malik, Sayyid Sarfraz Shah Naqvi, Rahila Jamil, Irfan Mazhar, Muhammad Khalid, Dr. Abdul Kamran, Dr. Abdul Jalil, Junaid Mahoon, Fazal Khan, Khurshid Alam Sandhu, and Gul Khan. Can I have a round of applause for all the volunteers? Ladies and gentlemen, the hospital that they said could not be built has today emerged as the most reputable charities of the country, where 75% of the patients receive financially supported treatment. I would like to invite Dr. Asif Loya, a senior consultant pathologist and medical director of Shaukat Khanum Cancer Hospital, to present the latest updates and details about the upcoming projects of the hospital. Dr. Asif Loya is also a diplomate of the American Board of Pathology, a fellow of the International Academy of Cytology, and a fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Asif Loya. Assalamu alaikum everyone, and thank you for the kind introduction. It's very heartening to see such a huge crowd, mashallah. Been going around various cities of Canada, and I must say that it's excellent and mashallah very nice to see such an overwhelming support for this cause everywhere in all the cities, and now especially in Calgary here. I was here last year as well, and I must say the numbers keep growing, so it's amazing, mashallah. So you can see the slides right and left of your wherever you're sitting, and in front as well. So what I'm going to do is just take you through some numbers, some updates about various projects, especially the Karachi project, and give you some stats as to where we stand at the moment,
how much what we've done over the years, especially in 2022, and what we've achieved as far as the accreditation for the hospital that you just heard, the Joint Commission, and what is the latest in that regard. So on the first slide you can see the main, the first picture in the center is that of the Lahore Hospital that was built in 1994, and it was inaugurated by the very first cancer patient, a girl 11 years old who was treated there and cured of cancer. Then in 2015, the Peshawar Hospital was inaugurated, again by a cancer patient who was treated there and cured of cancer. And now we have the third and the largest cancer hospital of the network coming up in Karachi. And what you can see in this picture is the architectural rendering of that hospital. But the building, the grey structure is already, and I'll show you some pictures of that grey structure as well, and tell you as to where we are with the finishing of that hospital. So as far as the cancer stats are concerned for Pakistan, these are the latest numbers. 180,000 new cancer cases come up every year in Pakistan, and out of these 90,000 patients die of cancer. So it's a huge number, and it tells you that the need for dedicated cancer hospitals in our country is huge. So these two hospitals are obviously doing their part, but we need more and more, and everyone, all NGOs, government, everyone needs to come up, and we need to have more dedicated cancer hospitals in our country. As far as which cancers are most common, breast cancer is the most common cancer in Pakistan, just like it is all over the world. This is followed by colorectal cancer and then head and neck cancers. And in pediatric population, leukemias are the most common, or the blood cancer is the most common cancer in children. Our mission statement states very clearly that our motto or our role is to be a model institution to treat patients who are suffering from cancer, but the most important bit is irrespective of their ability to pay. And this is something that was just mentioned, that 75% of the patients who come to this hospital, any of the hospital of the network, are treated completely free of charge. And this is something that we've maintained since the inception, and we inshallah aim to achieve that and maintain that over the years, and as we move on and build more and more cancer hospitals for the network. In addition to that, we take important role in educating healthcare professionals. We have various fellowship programs, residency programs, which are accredited by the College of Physicians and Surgeons of Pakistan, and these professionals are a very important source for us to have the manpower, people who are dedicated and who are actually trained to treat cancer, and something that goes a long way for us, especially in this current scenario where there is a lot of exodus of doctors, not only from our country but because of the economic situation, but as well as from Shaukat Khanum. So we need this program to flourish as much as we can. In addition to that, we have a dedicated research wing. Our clinical teams are involved in various clinical trials. There are lots of grants that keep coming in, not only from organizations like NIH or from UK or from Middle Eastern countries, but as well as organizations like Gates Foundation, Wellcome Trust. All these organizations we have links with, and we have grants coming in from these organizations. So some projects of Shaukat Khanum Trust. We have two hospitals, like I said, one in Peshawar, the other one in Lahore, and the third one is coming up in Karachi. The hospital in Karachi is situated on Superhighway, which is also called M10 or the Motorway 10.
and it's about 60 kilometers out of Karachi, going towards Hyderabad. And the reason for building that hospital there was twofold. First, obviously, to treat and to have a facility available for Karachiites. But then in addition to that, to have a facility available for people coming from interior Sindh, and not only interior Sindh, but as well as from Balochistan and from Quetta and all those areas. In addition to that, we have our diagnostic centers, which have diagnostic facilities like MRI, CT scans, mammography machines. We have our lab collection centers over there. Then in Karachi, in addition to the diagnostic center, we have an ambulatory clinic where we treat some of the most common cancers, and chemotherapy is given to them. Obviously, that's the only service that is available at the moment, but once the Karachi hospital comes up, then we will have all the services available for the city of Karachi in the city of Karachi. Then I would like to point your attention towards our lab collection centers. We have approximately 180 plus laboratory collection centers all over the country. And these lab collection centers play a very important role in generating revenue for the hospital. And what happens is that a patient comes in, they give their sample. These samples are diverted to one of our main labs, either in Lahore, Peshawar or Karachi, wherever the sample originated from. The tests are conducted and the results become online, and the patient can see their results online. So a very important revenue generating source, and we keep growing the numbers for these collection centers depending on the area where there is a need and where we think that these might take part in generating more revenue for the hospital. And obviously we depend on the donation and zakat from all of you, from people like you, but then in addition to that, we do need a source of revenue for the hospital, and that revenue can come not only from these collection centers, but as well as the clinical services that we provide to private patients who come to our network. So, as I said, 75% of the patients who come to the network, they are treated free of charge. And since the inception in 1994, we've spent 860 million Canadian dollars to treat these needy cancer patients who cannot afford treatment. And this number keeps growing every year. Our main aim and our main goal is to have equal opportunity for all the patients who present to us, be it a private patient or be it a patient on support. And it goes not only for the access to care, but as well as the diagnostic facilities, the treatment facilities, the surgical facilities, the follow-ups that they undergo, and then the accommodation facilities. You can see in the picture, this is the room that exists in that hospital, and there's no other room other than this room. That every room has 2 beds, and there are no private rooms, there are no VIP rooms. These are the only kind of rooms that we have, and a person lying on one bed doesn't know if the person lying on the other bed, if that patient is a paying patient or if that patient is on support. And same is the case for all the doctors who are treating the patients, nurses who are treating the patients, or the techs who are treating the patients. They don't know if the patient is on support or is a paying patient. So that's the beauty of the system, and this is something that we've maintained since the beginning. So some stats for the year 2022, last year. These are some numbers that we've done in 2022, and these numbers keep growing. Lab tests, 5.5 million lab tests were performed only in 2022. About 300,000 OPD visits. We have had about 70,000 chemotherapy sessions. We've had about almost 80,000 radiotherapy sessions, or the radiotherapy treatment that is provided. Almost 20,000 surgical procedures were performed. And the numbers speak for themselves. They keep growing every year. Last year when I showed you these numbers, they were a little less, but this year they've grown, and obviously with the opening of Karachi hospitals, the number will move up more and more, and they will keep moving up.
So, and this is only possible through the support that we get from all of you. Now, a bit about Joint Commission International. It was just mentioned that we've achieved the gold seal for the Joint Commission International, an agency that accredits hospital for the quality of service that they provide. Lahore Hospital became Joint Commission International accredited in 2018. Peshawar Hospital became accredited in 2019. But then in 2022, Joint Commission came up with a brand new way of accrediting the hospitals or the network of hospitals, and they called it Enterprise Accreditation. And Shaukat Khanum Memorial Trust, since we have two hospitals and an ambulatory clinic, that's the one in Karachi, so we decided to apply for that. Their team came, they did a grueling survey and audited us for almost 2 weeks, and I'm proud to announce that we were only the second network of hospitals in the world to achieve this accreditation back in August 2022. Now, another feather in our cap is this brand new accreditation that we just got last month, and that is specifically dedicated to cancer hospitals, and that is an accreditation by the American Society of Clinical Oncology. It's called Quality Oncology Practice Initiative. A lot of hospitals in US and perhaps in Canada are accredited by American Society of Clinical Oncology, but in that region where Shaukat Khanum is, in around Pakistan and Middle East, we were the only first ones to achieve this accreditation, and their auditors did not find a single flaw, and all the standards were met by our team. Now, this is the walk-in clinic, which is now functional at the main Karachi hospital sites. It is accepting patients who present there with their reports. These walk-in clinics are the main intake route for the patients into the hospital system. They come with their reports, with their results. We evaluate them based on the criteria that exist at that point in time. And if they fulfill the criteria, then they are taken into the system. They are evaluated whether they can afford the treatment themselves or if they need support. And based on the decision of if they need support, they are provided support. If they do not need support but they can afford the treatment, then they are taken into the system and they pay for their treatment. So this is the main intake route for all the patients who present to Shaukat Khanum. There is no appointment required. They just present with their reports, take the token in the morning, and they're seen by the number of token that they have with them. So this walk-in clinic just became operational about 5 months back in Karachi at the main Karachi hospital site. This was a way of promoting awareness that the Karachi hospital is coming up, and so that patients know about this place and that this hospital will be starting functioning very soon. Now, as far as investment in medical technology, as you must have noticed last time when I was here, I told you about what we've done for the Lahore hospital, for the Peshawar hospital, but this time it's for the Karachi hospital. We've already ordered the PET-CT machine for the Karachi hospital. PET-CT, obviously, as most of you would know, is a requirement for a cancer hospital, not only for diagnosis but as well as for the follow-up of these cancer patients once they've undergone treatment. We also have ordered a cyclotron. Cyclotron is the machine that actually makes the dye that is injected into these patients for them to undergo PET-CT, and which helps in diagnosing these cancers when they undergo PET-CT. We've also ordered a SPECT-CT, which is another way of diagnosing not only cancer but as well as non-cancerous diseases. We've ordered a digital mammography machine, a fluoroscopy machine, another kind of X-ray machine. All these machines have already been ordered for Karachi Hospital, and payments have been made in full for these machines. So as soon as the Karachi Hospital is functional, these machines will be there and they will be operational. Then, as far as the Lahore Hospital is concerned, we've just got a brand new 5th radiation machine, which was a replacement of an older machine. So we now have all 5 machines, which are relatively newer machines and state-of-the-art machines in that hospital.
Now, as far as research into the field of medicine and cancer is concerned, the numbers are there and they speak for themselves. We've had 973 publications out of Shaukat Khanum since the inception, which is a huge number. We've had clinical trials going on. We have grants available from various organizations, as I mentioned earlier in my talk. And we have dedicated research scientists, PhD scientists, who are running the Basic Sciences Lab, and we have 3 of them at the moment with us. Now, the training programs that I said play a very important role in making sure that we have enough manpower and enough doctors who can, and the nurses and the technologists who can diagnose, who can treat cancer, and who are the people that we can rely upon, that they will stay with us and they would actually be the backbone of our network of hospitals. So we have various fellowship and residency training programs. They're accredited by the College of Physicians and Surgeons of Pakistan. We have a nursing bachelor's degree program that is currently part of Shaukat Khanum's nursing program. We have various cancer related diploma programs for nurses, and then we have various workshops that we conduct for our nurses. Then in addition to that, our paramedical staff or our technologists, we have various diploma programs for our lab technologists as well as for our radiology technicians. Now, as far as raising awareness amongst public for cancer, breast cancer awareness campaign is a regular feature every year. This year, October, as most of you would know, is the Breast Cancer Awareness Month, and we have various programs ongoing, not only in hospital, but as well as our teams of doctors and volunteers. They actually go to various institutions and inform people about how to evaluate themselves for any lumps that they get in breast, and if they do get a lump in the breast, what to do, what kind of screening is required above a certain age for women. So all these information is conveyed during these awareness sessions that go on throughout the month, especially in the month of October. Then we have anti-tobacco campaign that happens every year. Now, something very important that I must tell you about is about 7 or 8 years back, we realized that the kids or children who undergo treatment for cancer at our institution, when they're undergoing treatment, they cannot go to school and they miss their school. So what we decided is to have a hospital-based schooling system for these kids. We hire dedicated teachers, we give them books, we teach them, they undergo examination while undergoing treatment. We do a graduation ceremony for these kids every year, which is a very important feature of the hospital that happens every year. In fact, before I was coming here, we just had the graduation ceremony for the last year, and the kids who graduated from various levels or various sections during the last year. So this is something that is very important, and we make sure that the kids do not lose touch with education, which is obviously a very important part, because once they are cured of cancer, they have to go back and be part of the daily life and be part of the school. So we don't want them to fall back on their education, and this is something that we undertook, and it's now, mashallah, a very established program at the hospital. Now, this is the picture of the Karachi hospital that currently, as it exists, the grey structure. The whole building is ready with regards to the grey structure. It's undergoing finishing touches. HVAC system is being installed. Various electricity works, natural gas related work, all different kind of work is going on. Tiles being installed, woodwork being carried out. So various different things are ongoing, and we are hoping that inshallah by the end of 2024 or very early 25, we should have this hospital up and functioning. But obviously we need a lot of support from you, because the task is humongous and we need a lot of dedicated support
especially for this hospital, and I'm going to tell you some numbers that are required to equip this hospital, to finish the hospital, and to make it functioning. This is what this hospital would have once it starts functioning. It would have a space for 10 radiation machines in the basement. It would have space for almost 70 chemotherapy beds. It would have space for 16 operation theaters. It would have almost 400 beds. It would have almost 40 outpatient units or outpatient clinics, as you would call them. And if we compare these numbers from Lahore, I'll tell you in the next slide as to what are these numbers compared to what we currently have in Lahore. Now, as far as the amount of money that is required for this hospital to be equipped, to finish it completely and to have it running is 150 million Canadian dollars. And obviously this cannot happen without the support from all of you from various parts of the world, from overseas Pakistanis all over the world who keep supporting us, and obviously the people in Pakistan who've always supported us. So it's really the support from all of you that we require to make sure that this hospital gets equipped and it starts functioning. So 102 million Canadian dollars is required to finish the construction, and 48 million Canadian dollars is required for the medical equipment that we require. And like I said, some of this medical equipment we've already ordered and it's ready to be delivered as soon as the hospital starts functioning. Now, this is the comparison between Lahore and Karachi Hospital. And as you can see, everything is doubled. In Karachi Hospital, it's the largest hospital of the network. In Lahore, we have 8 operation theatres. In Karachi, we would have 16. In Lahore, we have 5 radiation machines. In Karachi, we would have space for 10 radiation machines. In Lahore, we have about 200 inpatient beds. In Karachi, we would have more than 400 inpatient beds. In Lahore, we have about 35, 36 chemotherapy beds, whereas in Karachi we would have 70 chemotherapy beds. So everything is doubled to what we currently have in Lahore. And that is why this would be the biggest hospital, and that's why we require so much, and the amount that I just mentioned is required for it to start functioning and to equip this hospital. So, for the year 2023, I just told you that 150 million Canadian dollars is required just for Karachi Hospital. The rest of the amount is required to continue with the philanthropic spending, the treatment of these needy cancer patients, to continue some expansion of the expansion work that continues to go on for the Lahore and Peshawar Hospital, which are also already functioning, to obviously pay the salaries and everything. And the total amount that we require in 2023 is 212 million Canadian dollars. I'm sure it seems like a huge and humongous task, but believe you me that this continues to grow every year, and we continue to achieve that every year, and this only happens because of the support from all of you. So thank you so much for all the support we've got throughout the years from everyone and all the donors like you. Something that keeps coming up and used to be asked a lot, that zakat money that we get in, does it really go into treating these needy cancer patients, or where does it go? So what we decided is to get the Sharia compliance certificate from the Sharia Council in Pakistan. They came, they visited us, they saw our accounts, they audited us, and they come and audit us every year in this regard, and they did give us a Sharia compliance certificate which ensures that the zakat that comes in is spent as zakat and nothing else. And all these numbers are also available on Shaukat Khanum's website and can be easily accessed on the website where the audited accounts are available.
So the vision for the future, obviously, Karachi Hospital is something, like I said, we plan and hope that it will start functioning, inshallah, by the end of 2024 or very early 25. We want to have this hospital built, finished and equipped and functioning. That's our main aim. Currently, in addition to that, once the Karachi hospital is up and running, we plan to build a tower at the Lahore hospital, because Lahore hospital is really functioning to its capacity at the moment. We need more space, because that is the hospital that has the most intake at the moment of patients. We have huge numbers coming in every day, and in order to cater to that, we do need to increase the space there, and that is the task that we will undertake once the Karachi hospital is up, built and running. In addition to that, for the Peshawar hospital, expansion of services will continue to grow, and we will continue to increase the numbers over there as well, inshallah. So thank you very much for your attention and support, and my sincere thanks to all of you for to come over here and to support the cause. And I hope and pray that inshallah this hospital will also start functioning, and we will continue to do the work that we've been doing since the inception, and we plan to do for many years, inshallah. Thank you very much. Thank you. Thank you, Dr. Asif Loya. Now I will present a brief video, a testimonial documentary of patients. मेरी बहन भी डॉक्टर मेरे भी बड़ा हो गया डॉक्टर का रखा मेरा एक फादर मैंने बनवाया करो इतना क्रिकेट का जोश था कि मैं हर टाइम क्रिकेट खेलता रहता था। क्रिकेट खेलते खेलते पेन ज़्यादा होने लगे कि मैं चीखें मारने लग गया, तड़पने लगे एक तरह से। आहिस्ता आहिस्ता दर्द इतनी ज़्यादा होने लगी कि मुझे लग रहा था कि आज मेरी डेथ हो जाएगी। मैं डर रही थी ठीक है एकदम से टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर आ गई थी। इसके बाद था डॉक्टर को बहुत बुरा हाल बना, वो समझे जिंदा लाश जैसे बनी हुई वैसे हैं। हमने ये कहा कि इसकी जाए हमें हो जाए। सबसे बड़ा बेटा होने की वजह से वो जैसे बच्चों से सबसे बड़े बच्चे से कितना प्यार होता है। जब हमने इसका बीमारी का सवाल हम समझे मर गए थे। दूसरा केंद्र से उन्होंने कहा कि ये अगर आप चाहते हो कि आपका बहुत अच्छा इलाज हो, आपको फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप शौकत खानम का चले जाओ। मैं उसी दिन गला से सीखी थी इधर आ गई। मैं जब बच्चा नहीं फोन कर सकती, उन्होंने कहा कि आप फ्री इलाज करवाएंगे, फीस का इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ जैसे इलाज होता है, यहाँ के लोग इस तरह से अच्छे से बात सुनते हैं, तो मरीज की भी केयर करते हैं, माँ बाप को हौसला देते हैं। इस तरह से किसी और हॉस्पिटल में भी हमने नहीं देखा। हम लोग हर जगह देखते थे। हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, क्योंकि हमने इसके ऊपर काफ़ी सारी रिसर्च भी पढ़ी अमेरिकन कैंसर सोसाइटी में, तो बिल्कुल वही इलाज हमें यहाँ पर मुहैया किया गया। मैं बहुत खुश था इस वजह से कि एक कामयाब इलाज के साथ हम शौकत खानम के दरवाजे से बाहर निकले। वो लोग सबका ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं भी वो जितना हो सके इनको डोनेट और करें ताकि मेरी तरह और किसी बच्चों का इलाज हो सके। इस तरह ट्रीटमेंट के दौरान में ही एक ख्वाहिश पैदा हुई कि मैंने भी सितारे को सर करना। अगर शौकत खानम हॉस्पिटल ना होगा, मेरी जैसी माँ इसी तरह बच्चों को ताकत दे। जब से मेरा इलाज कंप्लीट हुआ है, तो मैं एज अ वॉलंटियर शौकत खानम आगे यही कोशिश करता हूँ कि यहाँ के पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा दे सकूँ, ताकि उनमें भी एक उम्मीद आए कि वो भी यहाँ से ठीक होकर जा सकें। वो तो
कैंसर सर्वाइवर पर मैंने भी हिम्मत दूसरों से भी ज़्यादा है। मेरे बहुत सारे ख्वाब हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ और इसी कैंसर हॉस्पिटल में रह के उन कैंसर के मरीजों का इलाज करूँ और मैं वो करूँ जो दूसरे नहीं कर सके। मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। घर की खातिर 100 दुख झेले, घर तो आखिर अपना है, घर तो आखिर अपना है। अपनी माँ की बेइंतहा मोहब्बत से सरशार दिल कह लें या इंसानियत बिलखसूस गरीबों की मोहब्बत का जज्बा, या मुल्क और कौम की बेलौस खिदमत का जुनून, ये खूबसूरत सोच ऐसे इंसान और कौमी हीरो का विजन है जिसने अपने ख्वाब से दूसरों के ख्वाबों को टूटने से बचाया। चाहे शौकत खानम लाहौर हो, पेशावर या अब कराची, ये सारे हस्पताल पाकिस्तान के गरीब मायूस मरीजों की शिफा और जिंदगी की नवीद बन चुके हैं। और हर रोज ये अस्पताल मुरझाई हुई रौनकों को जिंदगी की खुशियां लौटाते हैं। इस सोच के पीछे एक नाम, हमारा यकीन, हमारी उम्मीद, हमारा एतमाद, हमारी आन, हमारी जान, हमारी शान, हमारी पहचान। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द इलस्ट्रियस और चेयरपर्सन लाइफ लॉन्ग founder of Shaukat Khanum Memorial Hospital, Mr. Imran Khan. There's a message. और उसके बाद आप सबका जो इस फंड रेजिंग इवेंट में आ जाए। आज से 28 साल पहले मैंने अपनी कौम से वादा किया था क्या हम एक कैंसर हॉस्पिटल बनाएंगे जिधर पैसे वाले लोगों को मुल्क से बाहर इलाज करवाने में जाना पड़े, और जो हमारी अक्सरियत इस कौम की जो कैंसर का इलाज करवाने की सलाहियत नहीं रखती, वसाइल नहीं उनके पास, उनका वहाँ मुफ्त इलाज। तो ये 28 साल का सफर है। लाहौर का कैंसर हॉस्पिटल बना और अल्लाह का करम है 75% से ज्यादा कैंसर के मरीजों का वहाँ मुफ्त इलाज करवाया, बल्कि उसको एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग मिली। इसको जो जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल, ये एक सर्टिफिकेशन होती है दुनिया के हॉस्पिटल्स की कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल। तो शौकत खानम पहले लाहौर जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की उसको क्रेडिट रेटिंग मिली, मतलब ये कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल। फिर पेशावर का कैंसर हॉस्पिटल भी, उसको भी जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की सर्टिफिकेशन। तो हमने, और मुझे बड़ा फख्र है इस पे कि हम ये कर सके कि 2 क्वालिटी इंटरनेशनल क्वालिटी के हॉस्पिटल्स भी बना सके स्टेट ऑफ द आर्ट, और अपना वादा भी पूरा कर सके कि जो अक्सरियत है उसको मुफ्त कैंसर का इलाज कर सके। और ये याद है कि कैंसर का सबसे महंगा इलाज है। और ये मैं इसलिए कर सका कि मेरी कौम खुले दिल के लोग हैं। अल्लाह के नाम पे शायद ही कोई कौम ऐसा पैसा खर्च करती है जो हमारी कौम। इन्होंने पहले बनाए ये दोनों हॉस्पिटल्स, इनकी डोनेशन से बने, और फिर ये जो बड़ा चैलेंज था कि महंगी कैंसर का इलाज और अक्सरियत को मुफ्त देना, और वो भी क्वालिटी का इलाज, वो सिर्फ इसलिए हम कर सके कि पाकिस्तानी कौम ने इसको पूरी तरह सपोर्ट किया। अब एक बड़ा चैलेंज कराची में हम कैंसर का हॉस्पिटल बन रहे हैं, और
बड़ा हॉस्पिटल, और इसमें जो इक्विपमेंट है वो सबसे मॉडर्न। ये हॉस्पिटल सिंध को भी कैटर करेगा, बल्कि बलूचिस्तान का जो साउथ है उसको भी कैटर करेगा। लिहाजा हमें आपसे वो डोनेशन चाहिए जो पहले से भी ज़्यादा। मैं ये चाहता हूँ कि इस बारे आप दिल खोल के डोनेशन, और वजह पहले तो ये कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी है। जब हमने हॉस्पिटल शुरू किया था मुश्किल से था, 13-14 करोड़ लोग थे, अब 22 करोड़ से भी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो इस बढ़ती हुई आबादी के लिए ये 2 हॉस्पिटल तो काफ़ी नहीं है, ये तीसरा बनेगा, और इसके लिए हमें आपके डोनेशन की जरूरत है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मुल्क के हालात और इंटरनेशनल हालात ऐसे, महंगाई आजकल उधर तक पहुंच चुकी है कि सफ़ेद पोश लोग भी अपने कैंसर का जो सबसे महंगा इलाज है वो नहीं करवा सकते। तो मैं आज आप सबसे अपील कर रहा हूँ, जिस तरह आपने हमेशा मेरी मदद की, मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि इस बार आप दिल खोल के डोनेशन दें। तो हॉस्पिटल्स का जो इतना बड़ा खसारा होता है मुफ्त कैंसर इलाज का, ना तो वो हमने पूरा करना है, बल्कि हमने आप कराची का हॉस्पिटल जो अगले साल आखिर में खुलेगा उसके लिए भी हमें आपकी डोनेशन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह कभी आपने मुझे मायूस नहीं किया, अब भी आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। शुक्रिया। One more time, thank you very much, Imran Khan, for giving the best to the people, for making the life of the people better than yesterday. Those who spend their wealth in Allah's way by night and day, secretly or publicly, they will have their reward with their Lord. And no fear will be there concerning them, nor will they grieve. Surah Al-Baqarah. Now, for the main attraction, before I call upon the individual, I would like to say some words. I have formulated a small poetry for this individual who will be conducting the fundraising tonight. Here we go. A gem of a person, he is with a heart of gold, a well-respected face within the community member, whether young or old. For this foundation, he has always volunteered to serve with pride. This foundation has done marvels with his asset and stride. Tonight, another night where he'll be raising funds for the deserve. Every contribution you make will not go in vain and will be well served. This year, across Canada, he will host to raise more than 1 million with Shan. Yes, you guessed his name right. Please welcome a powerhouse, our beloved Shan. Put your hands together for the host of the night, a powerhouse who exemplifies, personifies par excellence performance for this foundation, Mr. Shan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, इतना ये जो इन्होंने तारुफ कहा है, इसे आप मजाक ही समझिएगा, इसको सीरियस ना प्लीज़ ले लीजिएगा, क्योंकि इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा होना है कि आज के प्रोग्राम में हम जो फंड्स जमा करते हैं वो कितने करते हैं, विच इज़ द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवनिंग। मुझे वैंकूवर में एक दोस्त ने कहा कि कैलगरी में बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी रहती है इवेंट के दौरान। तो पहले तो मैंने कहा लोग ज़ाहिर है हम मेहमान को अच्छा ट्रीट करते हैं और हमेशा अच्छे लफ्ज़ कहते हैं, तो मैं समझा शायद ऐसे कह रहे हैं। तो उसके बाद 2-3 और लोगों ने बात की कि कैलगरी में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं, आप बड़े खुशकिस्मत हैं कि कैलगरी की कम्युनिटी बड़ी अच्छी है। एंड देन आई हैड फ्यू मोर पीपल इन्हीं लाइन्स पे कि आपके पास बड़े एजुकेटेड लोग हैं, कैलगरी बड़ा वाइब्रेंट है, कैलगरी हमेशा लीड लेता है। जब 4-5 लोगों ने ये बात कही तो सीरियसली मैंने सीरियस लेना शुरू कर दिया, और इसका क्रेडिट
ज़ाहिर है किसी एक इंडिविजुअल को या एक ग्रुप या एक ऑर्गेनाइजेशन को नहीं जाता, इसको ओवरऑल होल कम्युनिटीज़ के लिए डिज़र्व करती है कि जो वो काम कर रहे हैं आप लोग सब मिलके और हम लोग सब मिलके। हम कभी कभी अपने शहर में अपनी कम्युनिटी में बहुत सारे मिसाल से भी गुजरते हैं तो हम डिप्रेस भी हो जाते हैं, बट सीरियसली द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट कैलगरी इज एंजॉयिंग अक्रॉस कनाडा वो बहुत अमेजिंग है और हमें अपने घर में पता नहीं चलता। एडमिंटन में भी मैंने इन्हीं चीज़ों को सुना कि आपकी कम्युनिटी बहुत ज़बरदस्त है। आज जब मैं अभी स्टेज पे आ रहा था तो आप लोग इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इतने खामोश बैठे हैं, इतने अच्छी तरह से प्रोग्राम को सुन रहे हैं कि मुझे पहली बार खौफ आया स्टेज पे आने के लिए। जब ऑडियंस इतनी डिसिप्लिन्ड हो ना तो आपको फियर होता है, ओ माय गॉड यहाँ हम कैसे बात करेंगे, किस तरह से पिच करेंगे, कैसे प्रोग्राम को लेके चलेंगे। तो इन सारी बातों के लिए मैं आपका मशकूर हूँ बहुत तहे दिल से फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस फॉर द इवनिंग। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलके प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं विद अ little bang, with a big round of applause for everyone being under this round. हम बहुत खुशकिस्मत लोग हैं कि हम कनाडा जैसे one of the nicest, one of the finest, one of the best country to live. लेकिन देखिए इस कंट्री में हमारा पहुंचना, यहाँ रहना, यहाँ ग्रो करना, इस ज़िंदगी को एंजॉय करना, इसके लिए हमने कोई सुरखाब के पर हमें नहीं लगे हैं। हम बहुत ऑर्डिनरी से लोग हैं, पर अल्लाह अलमाइटी, किस्मत, पेरेंट्स या जो भी हम कह लें, उन सब की वजह से हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हम इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं। थिंग्स मिडल ईस्ट में जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में, उन सारी चीज़ों में हमारे जैसे लोग वहाँ पर हैं और हमसे भी इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर हैं। और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका दिया है कि हम यहाँ पर आए हैं और इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, लिबरल डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तो इसको कभी ग्रांटेड फॉर ना लें, इसको कभी भी ग्रांटेड फॉर ना लें, क्योंकि इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लिए आती है, हमारे सामने आती है। मुझे कासिम के अब्बू कहना चाहिए या इमरान खान कहना चाहिए, आप बताइए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। खान साहब एक ऐसे लिविंग लेजेंड हैं, ये जो वर्ड लेजेंड है, अजीम है, हीरो है, ये बहुत अब्यूज़ हो गए हैं। हम बहुत सारे ऑर्डिनरी लोगों के लिए यूज़ कर लेते हैं, बट जेन्युइनली वो एक ऐसा इंसान उस मुआशरे में, उस मुल्क में अल्लाह ताला ने पैदा किया है कि बाई एनी डेफिनेशन, बाई एनी क्राइटेरिया आप उनको देखें तो वो जेन्युइन हीरो हैं। ही इज़ अ ट्रू लीडर, ही इज़ अ ट्रू सर्वर। और वो ये कहते हैं कि आपकी ये जो ज़िंदगी पर्पसलेस अगर गुजर गई ना, जिसको हम कैजुअली ये कहते हैं कि रोटी शोटी कमा ली, गाड़ी ले ली, घर बना लिया, बच्चे स्कूल में चले गए और ज़िंदगी हमारी गुजर गई, इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होने की आपको ज़रूरत नहीं है। पीपल विद एवरेज और बिलो एवरेज इंटेलिजेंस के साथ भी आप घर, गाड़ी, अपने मामले शामले सेट कर लेते हैं। जो पर्पस है ना लाइफ में, वो होना बहुत ज़रूरी है। खान साहब को नंबर ऑफ इंटरव्यूज जब उनको ये पूछा जाता है, रिसेंटली उनको पूछा गया जेल जाने से पहले, जब उनका लास्ट इंटरव्यू चला था आई थिंक BBC चैनल 4 पे, उनसे पूछा गया कि आपको डर नहीं लगता, आप पे 2 हमले हुए हैं कि आपको मार दिया जाएगा? तो उन्होंने सोचा नहीं, पॉज नहीं किया, कुछ नहीं कहा, विद इन अ सेकेंड उन्होंने कहा वी गोना डाई एनीवे वन डे। मैं मौत के खौफ से पर्पसलेस लाइफ कैसे गुजार सकता हूँ? हमने चले तो जाना ही एक दिन। तो ये जो पर्पस है ज़िंदगी में, ये आता है जब आप ड्रीम देखना शुरू करते हैं, ख्वाब देखना शुरू करते हैं ज़िंदगी में। वो ख्वाब जो आपके आसपास लोग कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उनको पॉसिबल करते हैं। एंड खान साहब की पूरी लाइफ इस चीज़ से भरी हुई है। फ्रॉम द क्रिकेट के बॉलर नहीं बन सकते, आर्म का इशू था, कैप्टन नहीं बन सकते, बैट्समैन नहीं बन सकते, हॉस्पिटल नहीं बन सकता, आप ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री पाकिस्तान में कैसे देंगे, पॉसिबल नहीं है। आप टांगा पार्टी हैं, आपकी पार्टी बड़ी नहीं हो सकती, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। आप ये जितनी चीज़ें जमा करना शुरू करते हैं, उनके अपोनेंट कुछ भी कहें, पर अगर आप न्यूट्रल होकर सोचें उस सोसाइटी, उस मुआशरे के अंदर, एक जेन्युइन ट्रू डेफिनेशन जिस हीरो की होनी चाहिए, दैट इज हु इमरान खान इज, लेडीज एंड जेंटलमैन। और उससे भी बढ़ के
ये जो 2-3 बड़े इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाए हैं, इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने बनाए हैं, इमरान जो शौकत खानम है उसमें से एक है। देखिए, जब तक आप जिंदा होते हैं आपके नाम से साथ चीज़ें चलती हैं। जब तक आप जिंदा होते हैं इंस्टीट्यूशन चल रहे होते हैं। जैसे ही आप साइड लाइन होते हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं, इदारे बंद हो जाते हैं, अनटिल एंड अनलेस दिस सिस्टम ड्रिवन। तो शौकत खानम हॉस्पिटल ना सिर्फ उन्होंने बनाया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बल्कि उसे एक ऐसा सिस्टम ड्रिवन इंस्टीट्यूट बनाया है कि आज इमरान खान साहब यहाँ कैलगरी में नहीं है, इस वक्त मौजूद नहीं है, पर ये जो सिस्टम उन्होंने डेवलप कर दिया है कि एक के बाद दूसरा हॉस्पिटल के तीसरा हॉस्पिटल, पूरी दुनिया में फंड रेजिंग हो रही है। आप में से कोई बता सकता है कि शौकत खानम ने रफली अब तक कितना पैसा खर्च किया है हकदार पेशेंट्स पे, मरीजों पे अब तक? एनीबडी? 40 अरब रुपए। एंड आई कुड बी रॉन्ग, हो सकता है या 42, 43 हो गए हों, क्योंकि जो डाटा अवेलेबल होता है वो फ्यू ईयर्स पुराना होता है। आप जरा तसव्वुर कीजिए, दिस माइंड बॉगलिंग नंबर है, 40 अरब रुपए खर्च हुए हैं। और वो पैसा कहाँ से आया है? एक रीजन कि इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी थी, ट्रांसपेरेंसी थी, एंड दूसरा ही बिल्ट एन इंस्टीट्यूशन जो कि सिस्टम ड्रिवन है, जो कि इमरान खान ड्रिवन नहीं है। इमरान खान हैं पिक्चर में तो भी, अगर वो नहीं भी हैं तो भी इंस्टीट्यूशन चल रहा है और इंशाल्लाह क़यामत तक ये चलता रहेगा। क्रेडिट गोज टू हिम कि उन्होंने ख्वाब देखा, एंड क्रेडिट गोज टू यू एंड पीपल लाइक अस जो पूरी दुनिया में फंड रेज करते हैं और इस इंस्टीट्यूशन को चलाते हैं। माएँ, मैंने लास्ट ईयर जिक्र किया था कि हम सब माओं से प्यार करते हैं, माएँ बहुत मरती हैं, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे माओं को, पर बहुत कम बेटे ऐसे होते हैं कि जो इतनी उलट पलट कर दें सोसाइटी के अंदर, एक नामुमकिन चीज़ को मुमकिन कर दें, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दें कि जिसको दुनिया का कोई स्टैंडर्ड फॉर बेस्ट इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर के हिसाब से जितनी सर्टिफिकेशन अभी आपने सुनी डॉक्टर वैसे कि वो उनको मिल जाए, इससे बड़ा और क्या स्टैंडर्ड हो सकता है। लास्ट टाइम जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी जाने की शौकत खानम लाहौर में, और मैं वॉक अराउंड कर रहा था, तो मैं अपनी आंखों से देखा था कि एक नर्स एक पेशेंट को उठा के वॉक कराने के लिए अपने हाथ से जूता पहना रही थी, चप्पल पहना रही थी उसकी। और ये फीलिंग, और कोई उस वक्त मैनेजर या डायरेक्टर या कोई डॉक्टर उस वक्त जो है ना वो नहीं था आसपास के वो उसको देख के करें। इसका मतलब ये है कि जो कल्चर सेट कर दिया गया है वहाँ पर, आपके पैसे से जो क्वालिटी ट्रीटमेंट लोगों को मिलता है, दैट इज सेकंड टू नन। और ये है अमेजिंग इंस्टीट्यूट शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल। हमारी माओं को अल्लाह ज़िंदगी दे जो हैं, हम शायद इंडिविजुअली उस लेवल के इंस्टीट्यूशंस नहीं बना सकते, लेकिन हम अपनी माओं के सदक़े में उस इंस्टीट्यूशन में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, हम उसकी मदद कर सकते हैं। इमरान खान जिंदाबाद। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई साकिब, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई साकिब, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। दिस इज हाउ मदर्स थिंक अबाउट अस। और आप अपने लिए, फैमिलीज के लिए, अपनी मदर्स के लिए, जिसके लिए भी, जिस नाम से भी आप इस कार खैर में, इस नेकी के काम में, इस इंस्टीट्यूशन को मदद करना चाहें, आप ज़रूर कीजिए। वो वी विल नॉट टेक मोर देन 20-25 मिनट्स। पूरी हमारी फंड रेजिंग है। पहली बात यह है कि कैलगरी की ऑडियंस इतना समझती है इस इंस्टीट्यूशन को, और इतना कन्विक्शन और पैशन है उनका कि हमें ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, पर फिर भी हम 20-25 मिनट आपके लेंगे और पैसे रेज करेंगे। किसी दोस्त ने कल एक एडमिंटन के इवेंट में मुझे कहा कि इस वक्त इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, मुश्किल हालात है। देखिए, वो कहते हैं जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना लाजिम है। जब मुश्किल होती है, महंगाई होती है, इन्फ्लेशन होता है, डोनेट करना मुश्किल होता है, उस वक्त ज़रूरी हो जाता है कि हम करें। इसलिए कि पेशेंट, कैंसर नहीं रुकता, ट्रीटमेंट नहीं रुकता, हॉस्पिटल नहीं बंद होते, लोगों को हमारी मदद की उस पहले से भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप दिल खोल के एहतियात अपने दीजिए इस प्रोग्राम में, और हम जितना जल्दी आज के फंड जमा कर लेंगे उतने हमारे लिए आसानी हो जाएगी। आई प्रॉमिस यू, आफ्टर द डिलीशियस डिनर, जो आर्टिस्ट पाकिस्तान से आई हैं, आपने अब तक उनकी सीडीज सुनी होंगी, आपने उनको टेलीविजन पे देखा होगा, पर शी इज अ रॉक स्टार। वो स्टेज पे इतना अच्छा एंगेजिंग एंटरटेन करती है, मुझे आइडिया नहीं था। एंड सीरियसली आप लोग आज बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन शाम
गुजार के यहाँ से जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम फंड रेजिंग शुरू करते हैं ऑन एंड ऑफ में डॉक्टर आमिर से, डॉक्टर तारिक से, गोया साहब एंड हमारे जो सारी साहब आए टोरंटो से, इनको भी आपके सामने बुलाता रहूँगा साथ में। प्रोग्राम का आगाज़ हम इस तरह से करते हैं कि आज मुझे ये ज़रा फैंसी सा माइक दिया है इन्होंने, ये टेक्नोलॉजी आ गई तो उन्होंने कहा कि एक हाथ में पेपर होते हैं, एक हाथ में पेन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बात करना बड़ा मुश्किल होती है। ऐसा करते हैं हम कि सबसे पहले अगर इस हॉल से मुझे 3 डोनेशंस ऐसे मिल जाएं जो कि $20,000 के हों, उससे हमारी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी और उससे ये भी मदद हमें मिल जाएगी, ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि हम आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और ये डोनेशंस कैसे काम करते हैं? जो 20,000 है, आपका बिजनेस हो सकता है, आप ग्रुप ऑफ पीपल हो सकते हैं, एक फैमिली हो सकती है जो मिल के दे सकते हैं, या एक टेबल पे जितने लोग बैठे हैं वो मिल के दे सकते हैं। और आपको मैं ये बताता चलूँ कि सर्फ जो है कैनेडियन एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन, ये शौकत खानम की एक तरह से सब्सिडरी है कनाडा के अंदर, और ये कैनेडियन जो लॉज हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके तहत बनी है। तो आपको टैक्स डिडक्टेबल रिसीट मिलती है जो आप अपने बिजनेस के लिए या अपने पर्सनल टैक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड दोज हु अंडरस्टैंड अकाउंटिंग, अगर आपका बिजनेस है तो आपको काफ़ी बड़ा ब्रेक मिल जाता है टैक्स पे जब आप पैसे देते हैं इस तरह की नेकी के काम में, बिकॉज जो रिसीट आपको मिलनी है वो आपको यहाँ की कैनेडियन टैक्स डिडक्टेबल रिसीट मिलनी है। सो $20,000 के अगर 3 अनाउंसमेंट मिल जाए इस हॉल से तो बहुत मज़ा आने वाला है। हम सीरियसली बहुत जल्दी प्रोग्राम को ख़त्म कर लेंगे। और मेरी आप दोस्तों से, बहनों से, भाइयों से सबसे एक हाथ जोड़ के गुंजाइश है, दरख्वास्त है कि अगले 20 मिनट अगर आप थोड़े अनइंटरप्टेड हमें दे दें। देखिए, आज की इवनिंग का एक पर्पज़ है एंड वी हैव अ जॉब टू डू, और वो पर्पज़ ये है कि पैसे जमा कर सकें हम जिनको ज़रूरत है पाकिस्तान में। तो इसलिए प्लीज़ अगर आप थोड़ी देर के लिए, यू गोना हैव ग्रेट टाइम आफ्टरवर्ड्स एनीवे, तो अगर थोड़ा सा हमारे साथ स्टेज की तरफ जुड़े रहें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। डू वी हैव द फर्स्ट अनाउंसमेंट टू मेक फॉर $20,000 लेडीज एंड जेंटलमैन? अच्छा, अगर आप ये समझते हैं ना कि पैसे नहीं आएंगे और अनाउंसमेंट नहीं होगी और मैं डिस्करेज हो जाऊंगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ये बिल्कुल आप ना समझिएगा कि बहुत देर तक कोई नहीं कहेगा तो इसका मतलब कि हम बहुत खुश हो जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। और मुझे ये पता है, आपने वो माइकल एंजेलो वाली बात सुनी होगी, मोस्ट लोगों ने सुन रखी होगी, जो मुजस्समा साज थे। उनसे किसी ने पूछा कि आप ये मुजस्समा पत्थर का बनाते कैसे हैं? तो उसने कहा कि मैं कोई भी स्टोन, कोई भी पत्थर लेता हूँ और उसका जो एक्स्ट्रा पत्थर होता है उसे झाड़ देता हूँ, बीच में से मुजस्समा पहले से मौजूद होता है जो निकल आता है। तो मैं बनाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक्स्ट्रा पत्थर को झाड़ता हूँ तो अंदर से निकल आता है। एनी ऑडियंस, स्मॉलर और बिग, 300 और 500 पीपल, देखिए मुजस्समा ऑडियंस के अंदर है और हमें सिर्फ ये करना है कि कुछ थोड़ी सी झाड़ पूंछ करके हमने वो जो बीच में से मुजस्समा है वो निकाल लेना है। ओके, सो गेस व्हाट, ladies and gentlemen, the first pledge of $20,000 right here, Dr. Tariq Awan and Sadia Tariq. जो एंड मैं आपको ये बता दूं कि डॉक्टर तारिक अवान लीड थे यहाँ शौकत खानम के पहले और अभी भी इस टीम का हिस्सा हैं। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम वाली बात है कि ये जो सारी टीम काम कर रही है, ये इतना पैशनेटली इस कॉज पे बिलीव करती है कि सबसे पहले चैरिटी अपने आप से शुरू करते हैं और इसका फिर मज़ा ये आता है कि दूसरे आप पे ट्रस्ट करने लगते हैं। सो वी गॉट फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ $20,000. आई नीड 2 more. If I could if I could get 2 more announcements of $20,000, seriously मैं आपको बताऊं half an hour नहीं लेंगे, maybe हम 20 minutes में fundraising खत्म कर देंगे। Does it make sense? आप सब यहाँ इसलिए हैं कि इमरान खान साहब की वजह से, देखिए ऐसा नहीं है। जिस हीरो को आप जानते हैं और जिस हालत में इस वक्त वो हैं पाकिस्तान में, ऐसी तालियों से काम नहीं चलता। Are we here for because of इमरान खान साहब? Thank you. एंड हम इस वजह से यहाँ पर हैं कि उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया है जो उनको बहुत नियर एंड डियर था,
जिसे वो अपने माँ से मंसूब करके गए हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर हम उस इंस्टीट्यूशन की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो इनडायरेक्टली आप इमरान खान साहब को खुश करते हैं या उनसे मोहब्बत करते हैं। यही मतलब है ना, निस्बत यही निकलती है ना इसमें से शौकत खानम हॉस्पिटल की। खान साहब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल से कितना प्यार करते हैं, मुझे कभी कभी सीरियसली लगता है कि इतना इमोशनलेस बंदा भी शौकत खानम के मामले में, मैंने उन्हें 2-3 बार देखा कि वो रो पड़ते हैं। वो अपने बच्चों से ज़्यादा, जिसे कहते हैं, अपने दिल के करीब रखते हैं इस इंस्टीट्यूशन को, शौकत खानम को। एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर, कि हम इस इंस्टीट्यूशन को कंटिन्यू रखने में, ग्रो करने में, आगे बढ़ने में उसकी मदद कर सकें। जो कराची का हॉस्पिटल है, हाउ मेनी पीपल इन दिस हॉल आर फ्रॉम कराची? थोड़ा सा ऊंचा हाथ करिए। जबरदस्त, थैंक यू। कराची का जो हॉस्पिटल है, अब जब आप पाकिस्तान जाएं, क्योंकि 29 दिसंबर को उसका इफ्तिताह हो रहा है, कुछ सेक्शन जो कंप्लीट हो गए हैं, उसकी इनॉग्रेशन 29 दिसंबर को होगी। तो आप जब पाकिस्तान इस बार जाएं कराची, तो ज़रूर आप उस हॉस्पिटल को विजिट करें। ये जितने ज़ाहिर अभी हमने देखा नहीं है, लेकिन जो कुछ उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, इट इज़ गोइंग टू बी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, जो कि लाहौर से डबल साइज है, रफली 2 मिलियन, डॉक्टर साहब 2 मिलियन स्क्वायर फीट, 2 मिलियन, 20 लाख स्क्वायर फीट की जगह होगी उस हॉस्पिटल की। लुक एट द साइज। और वो इस खूबसूरती से उसको डिजाइन किया एरिया में कि पूरा जो अंदरून सिंध है उसको आना आसान होगा, उससे कराची में से गुजर के नहीं जाना पड़ेगा। जो बलूचिस्तान का एरिया सिंध के साथ लगता है, उनको भी कराची जाने की जरूरत नहीं, वो सीधा उस इंस्टीट्यूशन में चले जाएंगे। और वहाँ पर लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट जितनी मॉडर्न चीज़ें लग सकती हैं, वो उस इंस्टीट्यूशन में लग रही हैं। और ये आपके शहर में बन रहा है, कराची में। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग इसकी कदर नहीं करते, बट इट टेल्स यू कि जब लाहौर का हॉस्पिटल बना था, ये कहा गया कि ये बन नहीं सकता, बन गया तो इस बिजनेस मॉडल पे चल नहीं कर सकता, सस्टेन नहीं कर सकता, क्योंकि फ्री इलाज मुमकिन नहीं है। वो बना, वो चला, और उसको रेप्लिकेट किया कहाँ पर? पेशावर में। और अब जो इंस्टीट्यूट है कराची का, वो बना है, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशन इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, द रीजन बिकॉज पीपल लाइक योरसेल्फ have been donating generously। एक 20,000 का सर और मुझे इनाम चाहिए, डोनेशन। Do we have $20,000? One more, $20,000। फैमिली, टेबल पे बैठे सारे लोग, a group of people, business, जिस तरह से भी आप शेयर करके इसको कर सकते हैं। Can I please get one more donation of $20,000? मशवरा is happening on सब table, I tell you guys। बहुत जल्द हमें पता चलेगा कि हमारे पास आएगा। इससे पहले कि मैं $20,000 की अनाउंसमेंट करें, हम जाते हैं $10,000 पे। एंड 10,000 के 5 जो हमारी एक्सपेक्टेशन है आज की शाम से फंड रेजिंग की, उसके हिसाब से ये स्लैब्स मैंने बनाए हैं। $10,000 के 5 डोनेशंस हमें चाहिए, 5 डोनेशंस। और मुझे पता है कि 3 तो मैं अभी काउंट कर सकता हूँ, मुझे पता है कि जो मुझे अभी अनाउंस करने हैं थोड़ी देर में, और उसके अलावा 2 और चाहिए, तो 5 चाहिए $10,000। वॉलंटियर्स हैं हॉल के अंदर हर तरफ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अवान, हमारे वॉलंटियर्स हैं सर सारे हॉल के अंदर? जी आइए इधर। You guys, okay, मैं समझा 20,000 वाला लेके आई हैं, लेकिन आएगा बहुत जल्द आएगा। 10,000 के 5 डोनेशंस हमें चाहिए। अगर जल्दी आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है, हमारा टाइम भी बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, और इस नेक काम में हम ज्यादा पैसे जमा कर पाएंगे। So ladies and gentlemen, $10,000, Dr. Amir Aslam and Dr. Dania Imran. And डॉक्टर असलम जो हैं वो लीड है शौकत खानम के यहाँ पर। आपने अभी उनको वेलकम नोट के लिए देखा भी था, सुना भी था। एंड ये लिविंग एग्जाम्पल है कि जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, तो यू सेट द स्टैंडर्ड कि भाई आप रोल मॉडल बनते हैं। तो उन्होंने चैरिटी हमारे दोनों डॉक्टर्स ने सबसे पहले खुद से की है। $10,000। हमें इसके बाद 4 और डोनेशन चाहिए हमें $10,000 के। उस्मान ये ले लीजिए प्लीज, थैंक यू। ये कुछ और फॉर्म्स है आपके पास, एक्सक्यूज मी,
Okay, $10,000. अच्छा, या तो 10,000 आप दे दीजिए हर कोई यहाँ पर बैठा, या फिर ये कीजिए कि जब कोई दे तो दिल खोल के पैशन के साथ उसे अप्रिशिएट कीजिए। मजर मलिक साहब एंड उनके मिसेस बैठी हैं, $10,000 इनकी तरफ से आए हैं, एंड ही इज अनदर इंडिविजुअल, एंड ही इज अनदर इंडिविजुअल सीरियसली फॉर मेनी इयर्स कैलगरी के अंदर I have seen him helping almost any and every organization जिसका भी ताल्लुक humanity से, back home से या यहाँ से होता है, ये बहुत generously पैसा देते हैं। Thank you मलिक साहब for doing this, and thank you भाभी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। We got 2 and we need 2 more. Okay, so I have another one, $10,000, Adiba and Dr. Asad Mir. $10,000, डॉक्टर असद मीर एंड अदीबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ भी मौजूद हैं, मैं शायद पहचानता नहीं, आप जहाँ भी मौजूद हैं, थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू, अप्रिशिएट। ओके, सो 2 more, we have 3, so need 2 more $10,000. Okay, we have another $10,000 here. Volunteers अगर मुझे हेल्प कर सकें, जी सर। फरहद हैदरी, इस टेबल से ये पैसे आए हैं। फरहद हैदरी, आप हैं जी, आप हैं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। $10,000 आपने दिए हैं, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे, और ये जो हॉस्पिटल है ये चलता रहे इसी तरह से, एंड आपकी वजह से हमें भी और मौका और हौसला मिले, इंकरेजमेंट मिले कि हम ये कर सके। आई नीड 1 more $10,000 लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि जो माएँ हैं वो अनडाउटेडली, अनकंडीशनली वो आपसे प्यार करती हैं, और हम सब करते हैं अपनी माँओं से, पर आप सोचिए कि कितनी माएँ चली जाती हैं दुनिया से और उनके बेटे। आई थिंक वी हैव अ डोनेशन ऑन दैट टेबल प्लीज। और हम सलाम है उस माँ को जिसके नाम पे शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना है, और सलाम है उस माँ को कि जिसने वो बेटा जना है, वो हीरो पैदा किया है कि पाकिस्तान के 25 करोड़ में सिवाय अंधेरों के, सिवाय तारीकी के और पस्ती के, जब आपको कुछ नहीं नजर आता सीरियसली, तो एक रोशन मिनारा, एक रियल, एक जेन्युइन, एक ट्रू हीरो लगता है, जिसका नाम इमरान खान है। हम सल्यूट करते हैं उस मदर को, शौकत खानम को, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। 1 more, we have 4 $10,000, एक और चाहिए मुझे प्लीज। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि 5 के बाद आप दे नहीं सकते, लेकिन ये मेरी एक्सपेक्टेशन आपसे है कि मुझे एक और $10,000 का चाहिए। जो लास्ट ईयर हमने नंबर्स यहाँ पर रेस किए थे, एक तो उसको हम बीट कर सकें, दूसरा ये कि जो हाई एक्सपेक्टेशन दूसरे शहरों ने बताई है मुझे कि कैलगरी बहुत अमेजिंग एंड वंडरफुल है, हम उस हिस्ट्री को, उस रेपुटेशन को, इमेज को मेंटेन करना चाहते हैं कि कैलगरी ने ज्यादा किया वेस्टर्न कनाडा में बाकी शहरों से, और इंशाल्लाह वी विल डे। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस। जब यहाँ हम नंबर्स अनाउंस करने लगेंगे तो आपको आइडिया होगा कि कितनी तेजी से पैसे डोनेट हो रहे हैं। बहुत सारे दोस्त हैं जो बताना नहीं चाहते, जो नाम नहीं लेना चाहते, एनोनिमस रखना चाहते हैं, और मुझे पता है कि वो फॉर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं। डू आई हैव अनदर $10,000 लेडीज एंड जेंटलमैन? एंड आई रिपीट, आप अकेले, 4-5 दोस्त मिलके, टेबल मिलके, फैमिलीज मिलके, या अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस के नाम पे दे सकते हैं $10,000। देखिए, आइडियल सिचुएशन लाइफ में कभी नहीं होती कि आप ये सोचें कि अब मेरे पास बहुत पैसा है और अब मेरी सारी जरूरतें पूरी हो गई हैं, अब मैं डोनेट कर सकता हूँ। देयर इज नो सच थिंग, ये कभी लाइफ में नहीं होता। जब भी हम डोनेट करने लगेंगे, हमें कहीं ना कहीं से स्क्वीज करना पड़ता है कि अच्छा ये जरूरतें तो हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि ये नेकी का काम कर लेते हैं। $10,000। ओके, सो
I know, I love this mashwara ये जो टेबल पे हो रहा होता है सर जोड़ के, and I can see that a lot of mashwaras are happening on a lot of tables. और मुझे पता है कि वो donations आने वाले हैं, because बहुत सारे दोस्तों को मैं पहचानता हूँ कि वो हर साल donate करते हैं इसको. $10,000 एक और चाहिए और वो आएगा. इसके साथ हम move करते हैं $5,000 में. $5,000. $5,000 के 5 चाहिए. मैं 10 कहने लगा था, but let's keep it for 5 for now. 5 donations चाहिए $5,000 के. वो आप बाहम मशवरा करें इससे पहले कि हम announce करें. I've got $5,000 from Anonymous. नहीं बताना चाहते ये नाम. आप जो भी हैं, जहाँ भी हैं, अल्लाह आपको जज़ा दे और आपके रिज़्क़ में और इजाफा करे. आप ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं. ग्रेट सूफी शायर है ना रूमी ये कहते हैं कि ये इबादत वगैरह हम जितनी भी करते हैं और करनी भी चाहिए, हम करते भी हैं. वो ये कहते हैं कि no religion whatsoever is bigger than humanity. अगर आप इंसानियत, आपके आसपास लोगों का दुख या दर्द नहीं दूर कर सकते और उस पर आपको तकलीफ नहीं होती और आप आंखें बंद करके या कान लपेट के गुजर जाते हैं, तो ऐसी इबादत के बारे में रूमी कहते हैं कि ह्यूमैनिटी से वो बहुत छोटी हैं. No religion is bigger than humanity. और ये बिलीव है किसी भी रिलीजन में आप देखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो टीचिंग है वो ये है, हेल्पिंग अदर्स जो कि खुद हेल्प नहीं कर सकते अपनी. Ladies and gentlemen, I am so honored and happy and privileged and excited that I've got the last $10,000. So we have टारगेट था $10,000 का, वो हमें 5 मिल गए हैं. आपका बहुत 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 शुक्रिया. और मुझे पता है कुछ और भी अभी आ सकते हैं, बट बहुत ज़बरदस्त काम आपने किया है. Let's give a huge round of applause for all those 5 donors जिन्होंने $10,000 दिए. And out of जो 5 मैंने कहा था मुझे $5,000 के चाहिए, I got the first donation $5,000 और ये आया है आयशा एंड तौसीफ चुगताई. तौसीफ भाई एंड आयशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे. So we need 4 more $5,000. 4 or 3? 4. No, 3. I've got 2 $5,000 के, मुझे 3 और चाहिए $5,000 के. Meanwhile आप मशवरा जारी रखें. मैं I'll take this moment to introduce you, not to introduce you, to present you our very own politician. तो हैं, मिनिस्टर हैं अल्बर्टा की कैबिनेट में, पर इससे भी ज़्यादा ये है कि he is one of us. He has been serving our community in many capacities for many years. Ladies and gentlemen, please welcome Mohammad Yasin Saab. यासिन भाई, आप प्लीज़ मेरे साथ शामिल हो जाइए. मैसेज भी दीजिए और कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री. आप ये माइक ले लीजिए. इज दिस ऑन? माइक नंबर 11. जी आमिर भाई, आप भी आ जाइए प्लीज़. जी यासिन भाई, फील फ्री. या Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for that kind introduction, and thank you very much the Calgary Surf team led by Dr. Amar Aslam and his volunteers, his helpers and his supporters who have managed, first of all, to be here in the first place, and they have been very generous just to be here, and we are also witnessing their further generosity as they continue to donate. Let's give them a warm round of applause. Helping others is always a noble cause, but helping those who really need help and cannot afford to take care of themselves is a real noble cause. So I am so thankful to all of you who took the time
and participated in this event and have been encouraging others to do the same. This is so amazing that this event is held every year, and this hall is always full. As Shan Bhai has mentioned, that Calgary has a reputation around this country that they're very generous, they're very helping, and they come forward in times like this. And so we are so thankful to you for all that. And thank you, Shan Bhai, for your work that you have been doing across Canada. I have been seeing you here and there on the Facebook, the contribution that you make in this very noble cause. I just want to say, just thank you again for all the work that the team, Shaukat, Khanum, here, the research center, and it's a charity here. As mentioned by earlier here today, that this is a tax deductible donation that you will make. And let us all do the same and make a little bit of donation, even whatever we can afford, and I will do my part. Thank you very much, and all the best to all of you. Thank you. Thank you, Yasin bhai. Bahut bahut shukriya for making the time and joining us this evening. Ladies and gentlemen, my brothers and sisters who are standing at the back, please आपसे request है, थोड़ी देर हमें और दे दीजिए. Please have a seat and हमारे साथ stage की तरफ connected रहिए थोड़ी देर के तक लिए please. We're probably going to take another 10-12 minutes seriously और उसके बाद हम done हो जाएंगे. Please, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इमरान भाई, ये सारे दोस्त उधर खड़े हो, please बैठ जाइए आप. नवीद भाई बैठिए please. Let's maintain the standards जो शाम से हमारा disciplined audience का था. Please वो वैसे ही रहे. I have another announcement to make, ladies and gentlemen. I've got $6,000 here. $6,000 from Samina Ashraf Bajwa. और So Dr. Bajwa, आप जानते हैं ये usual suspect हैं ये. नेकी के काम में आप इन पे शक कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं कोई अच्छा काम हो रहा होगा तो ये ज़रूर करेंगे. तो ये यूजुअल सस्पेक्ट हैं. समीना बाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. इनके हस्बैंड डॉक्टर अब्दुल कादिर कामरान साहब, वो भी बहुत जेनरसली कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, एंड ही इज़ इन द हॉल एज वेल. बहुत बहुत शुक्रिया. एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू अनाउंस कि एक जो फाउंडिंग स्टोन है हॉस्पिटल के अंदर, वो ये है कि आप अपने नाम से, अपनी मदर, फादर या फैमिली मेंबर के नाम से प्रैक्टिकली वो स्टोन लगेगा जिस पे वो नाम लिखा जाएगा. कराची के हॉस्पिटल में इस वक्त वो चल रहा है, बिकॉज कराची का हॉस्पिटल इज अंडर कंस्ट्रक्शन. वो है $6,800 में. So आपका डोनेशन है लाइक एनी अदर डोनेशन, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके किसी फैमिली मेंबर का, आपके किसी प्यारे का नाम लिखा जाए उस पर for many decades to come, so नाम लिखने का अरेंजमेंट है. फॉर्म्स भी हैं आपकी टेबल पे. नहीं तो हमारे किसी भी वॉलंटियर को आप बता दीजिए कि that you're interested to get your family's name on that. $6,800 का वो डोनेशन है. थैंक यू. ओके, सो ये मैं अभी रखता हूँ अपने पास. ओके, मुझे दे दें आप ये. ओके, सो $5,000 के मेरे पास 3 डोनेशंस आए, 3 और 4 आए थे डॉक्टर आमिर. आमिर में 4 $5,000 के आए हैं. Yeah, I think we got 4. I need one more $5,000. $5,000, ladies and gentlemen. एक और डोनेशन चाहिए. A group of people, table, family, business, जिस तरह से आप बाहम मशवरा करके करना चाहें. If I could please get one more announcement, one more donation of $5,000, I will really be grateful, ladies and gentlemen. और उसके साथ हम 5,000 से और $6,800 का वो जो नेम स्टोन है, फाउंडिंग स्टोन है, वो लगता है वो है $6,800 का. अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो प्लीज रेज योर हैंड, फॉर्म पे लिख दीजिए, और वन ऑफ द वॉलंटियर आपके आसपास से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड लेट्स डू $2,000. अब ये 5 से मैं एकदम से 2,000 पे चला गया हूँ. प्लीज ऐसा मत समझिएगा कि मैं वो कारपेट बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आप ऐसा समझते भी हैं तो सीरियसली फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरा पैशन, मेरा बिलीव इस इंस्टीट्यूशन पे, इस कॉज पे इतना ज़्यादा है. वो पंजाबी में कहते हैं कि औखी कार फकीरी वाली, औखी कार फकीरी वाली माइयो भैनों कहना.
یہ جو مانگنا ہے نا اپنے لیے یا کسی کے لیے, یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ کو مائی, بہن, بیٹی, بردر کہنا پڑتا ہے. یہ پنجابی کا شعر ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے بھی ہیں سیریسلی کہ I might sound as a sales person, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, کیونکہ I strongly believe, we all believe in this cause. اور ہم اس ایونٹ کو پرپز فلی رکھنا چاہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ, کھانے کے ساتھ, سوشلائز جو ہم کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم پیسے بھی جمع کر سکیں فار دوز جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. کینسر از اے ویری ویری اسپیشل ڈیزیز. اٹ از پینفل, it is expensive and it is complicated. یہ نارمل جو آپ کو چھوٹی موٹی کوئی بیماری ہو جائے ویسی نہیں ہے. بہت سارے دوست یہ سمجھتے ہیں. کنٹری جہاں پر پبلک ہیلتھ سسٹم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, وہاں پر سوچیں اگر آپ کو ایسی بیماری لگ جائے اور آپ ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے جو بہت پیسہ افورڈ نہیں کر سکتے, جسٹ امیجن دا پین اے پرسن وڈ گو تھرو. ناٹ جسٹ دا پرسن جس کو کینسر ہے, اس کی فیملی, اس کے مدر, پیرنٹس, فادر یا باقی لوگ جو اس طرح کے. اور آپ ٹیسٹیمونیلز اگر آپ نے سنے ہیں تھوڑے سے یوٹیوب پہ جا کے سنیے تو آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے دا پین پیپل گو تھرو. اور ایسے میں دا اونلی ہوپ, دا اونلی تھنگ وچ کین چینج لائف is your donation. So $2,000 کے 10 ہمیں چاہیے ڈونیشنز. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس 10 میں سے میرے پاس کچھ آ بھی گئے ہیں تو وہ ہم مائنس کر دیں گے, اس لیے آپ اپنے ذرا جو کہتے ہیں اینکشیس نہ ہوئیے زیادہ اس بارے میں. I've got a $2,000 donation from زاہد رفیق صاحب. My apologies, I was not supposed to be announcing this name, but نیکی کا کام ہے تو کوئی نہیں, اگر مجھ غلطی سے ہم نے کر دیا ہے تو. I have another anonymous $1,500 کا announcement ہے یہ. اس کے بعد I have another one which is, it doesn't say anonymous, تو یہ ابھی میں یہ ہولڈ کروں گا اپنے پاس. $2,000 کے جو ہمیں 10 چاہیے اس میں سے ہمیں 1 مل گیا, 2 مل گئے, سوری جی ڈاکٹر صاحب, سوری یہ ملے ہیں ہمیں. I can announce that? Oh, perfect. Okay, wonderful. Okay, so we have few more announcements to make. Dr. Amir Aslam لے کے آئے ہیں. صدیقہ بابا $4,000. Then we have Hafiz Azhar Rafiq $4,000. ارشد منہاس رینچ لینڈ فارمیسی والے ہیں. He's another brother جن پہ آپ ہمیشہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں for any good cause, وہ کبھی ڈسپوائنٹ نہیں کریں گے. ارشد منہاس of رینچ لینڈ فارمیسی $4,000. I have another announcement to make, اور وہ میں نام یاد رکھوں گا, میں ابھی نہیں کر رہا, وہ میں اس کو ہولڈ کرتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. So $2,000 کے جو ہمیں 10 چاہیے تھے وہ ایکچولی 2 ہمارے پاس آ گئے ہیں. ایک 1,500 کا 3 ہو گئے ہیں, 7 ہمیں اور چاہیے $2,000 کے. Do we have a $2,000? Oh, wonderful. So this is for the, if I'm not mistaken, anonymous رکھنا ہے, یہ نہیں بتانا ہے, but I have, ladies and gentlemen, $6,000, $6,800. جو بھی فیملی جس بھی انڈیویجول نے دیا ہے, ہماری پریئرز آپ کے لیے, اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں کرے اور آپ کو اور ہمت دے کہ آپ مدد کر سکیں. I have another $2,000, Dr. Suraya Kabir, $2,000, ladies and gentlemen. Okay, and this is so wonderful. ہم ہمیشہ جو کہتے ہیں نا وہ ایکسیڈ کرتے ہیں ایکسپیکٹیشنز جو ہماری یہاں کی کیلگری کی ہیں, and that روایت, that tradition کنٹینیو ہو رہی ہے یہاں پر. $2,000 from Aisha Fatima for my Nana Abdul Wakil. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. That is $2,000 and it's already been paid. Okay, so we have anonymous another $6,800. Founding donor کا یہ ہے, اور پہلا بھی founding donor کا تھا. Wonderful. Thank you. Thank you, ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ یہاں اسٹے بھی کر سکتے ہیں 1 منٹ. ڈاکٹر طارق آپ آ جائیے. ڈاکٹر طارق اوان صاحب, پلیز join me for a minute here. Okay, so I have another announcement to make. Irfan and Anis Mazhar. I hope میں نے نام غلط نہیں لیا. Irfan and
Anisa Mazhar, $5,000. Thank you. We genuinely appreciate the gesture जो आप शो कर रहे हैं. ये जो सारी टीम यहाँ वॉलंटियर्स की काम कर रही है, जो पाकिस्तान से टीम आई है, इस पूरी इवनिंग को सजाने संवारने का, इसकी नोक फलक बनाने के पीछे एक कॉज है, द हार्डकोर कॉज. वो ये है कि फंड जनरेट करना उन पेशेंट्स के लिए, उस इंस्टीट्यूशन के लिए जिसे हमारे पैसों की बहुत ज़रूरत है. और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप लोग हमारी तवक्कुआत से बढ़ के पैसे दे रहे हैं. अल्लाह ताला इसको आपको इसकी बहुत जज़ा दे. जी. Okay, that is so wonderful. We have Sara Rizwan and Rizwan Rahman, $10,000. और if you remember, मैंने आपसे कहा था कि मुझे 5 चाहिए और 4 आए थे, तो मैंने कहा था कि आ जाना है थोड़ी देर में. मेरा बड़ा strong conviction and belief है. मुझे ये था कि $10,000 का हमारा 5 donation आ जाना है. And now we're done with $10,000. I mean, कोई भी देना चाहे आप भी, but this is so wonderful that expectation was 5 और वो हमें मिल गई है. Thank you so much. Yeah. I have few announcements. डॉक्टर साहब आपके पास कुछ हैं? डॉक्टर साहब आप माइक ले लीजिए प्लीज, आप मेरे साथ ज्वाइन करिए, बात कीजिए, थोड़ी आसानी हो जाती है. या पोडियम पे चले जाइए अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं. I have few announcements to make और ये miscellaneous different numbers हैं. डॉक्टर अवान अगर आप मुझे 1 सेकंड दें तो I have $2,000 from Dr. Suraya Kabir, मैंने पहले आपको अनाउंस कर दिया था. $1,000 from Shabana Shehzad, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, she is one of our finest volunteer. इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, टाइम देती हैं बहुत पैशनेटली, उनके बच्चे भी टाइम देते हैं और ये मेरा ख्याल है कि उनकी तरफ से मुझे पता है. $1,000. थैंक यू. उसके बाद है जी I have शफकत मलिक साहब, $1,000. मलिक साहब आप यहाँ इस टेबल पे बैठे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह. I have another announcement to make. Sara Makhtoom, $1,000. एक anonymous donation है $1,000 का, नाम नहीं बताना चाहते, बहुत बहुत शुक्रिया. And we have Miss Roland Tabassum, $1,000. Abdul Salam and Zahira Salam, $1,000. We have Nusrat Asif, Professional Corporation, $1,000. And I have $2,000 from Iffat Rana and Rana Satwat. And Rana Satwat is part of our volunteers की जो टीम है और ऑर्गेनाइजिंग की जो बॉडी है उसके अंदर हैं. बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब. एंड आई हैव अनदर अनाउंसमेंट टू मेक. अनोनिमस रखना चाहते हैं, आई एम श्योर, मैं ये नहीं बता रहा, बट दिस इज $1,000 लेडीज एंड जेंटलमैन. डॉक्टर वान आप कहिए कुछ. जी अस्सलाम वालेकुम. आई थिंक इट्स ऑलरेडी क्वाइट लेट, सो डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम. हम लोगों ने इमरान खान का मैसेज तो सुना है, उनकी अपील भी सुनी है, एंड वी नो दैट गिवन द करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान where there is a lawlessness and really very high inflation, and when you put that together with the dreadful disease like cancer for a poor patient, this is the time we have to do more extra and with our best abilities. That's all I have to say for now. Thank you. Thank you, Dr. Awan. बहुत बहुत शुक्रिया. हम I think we almost conclusion की तरफ जा रहे हैं, जो फंड रेजिंग का पार्ट था. मुझे अगर आप डॉक्टर साहब टोटल बता सकें अब तक, I would really love to know and announce for the interest of the audience. देखिए, खान साहब के बारे में आप बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, पढ़ते हैं और आप देखते हैं. मैं आपसे 2 स्टोरियाँ उनकी शेयर करता हूँ. आप बहुत सारे लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं. पाकिस्तान में एक उर्दू का मैगजीन निकलता था जिसका नाम था अखबार वतन, और ये क्रिकेट पे था. कितने लोगों को पता है अखबार वतन का? इट वाज अ रिसाला, काफ़ी थिक रिसाला होता था. मुनीर हुसैन साहब जो हैं वो उसके चीफ एडिटर थे, और मुनीर हुसैन कमेंटेटर भी थे पाकिस्तान क्रिकेट के, उर्दू में कमेंट्री करते थे.
प्लीज मेरे साथ रहिएगा लेडीज एंड जेंटलमैन. एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा सा टाइम आपसे 5 मिनट और चाहिए, प्लीज हमारे साथ स्टेज पे जुड़े रहे. थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपनी बातें जरा सा रोक लीजिए. आपके बहुत बहुत शुक्रिया. जी मैं अभी कर देता. मुझे टोटल अगर बताएंगे प्लीज. अच्छा, अखबार वतन के जो चीफ एडिटर थे मुनीर हुसैन साहब, जब 92 का वर्ल्ड कप जीता पाकिस्तान ने, तो उनके बेटे हैं जिनका नाम है अख्तर मुनीर. तो अख्तर मुनीर ने अपने फादर से कहा, मुनीर हुसैन से, कि डैड मैं इमरान खान साहब पे एक किताब लिखना चाहता हूँ, तो आप मेरी उनसे मुलाकात करवा सकते हैं किसी तरह से. तो मुनीर हुसैन ने कहा कि जब वो नेक्स्ट टाइम आएंगे कराची तो मैं आपकी मुलाकात करवा दूंगा. सो बराबर रीज़न, जब खान साहब कराची एक बार आए तो उन्होंने कहा कि बेटा आपसे मिलना चाहता है. तो खान साहब का उस वक्त बहुत कम बोलते थे, बहुत पीक पे थे, वर्ल्ड कप जीता था, वैसे भी वो कम गो आदमी है. तो उन्होंने कहा कि वंडरफुल. सो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले आइए अपने बेटे को. तो अख्तर मुनीर जो है शेरेटन होटल में खान साहब से मिलवाने लेके गए. मुनीर हुसैन साहब, मैं जिस कंपनी में काम करता था, मैं मीडिया मैनेजर था, तो हम ये मीडिया से डील करते थे. मुनीर हुसैन और अख्तर मुनीर मुझे वो किताब देने आते जो मैं स्टोरी आपको सुना. तो अख्तर मुनीर उनके पास मिले तो कहते हैं, मुनीर हुसैन साहब ने कहा कि 2-3 मिनट है खान साहब के बाद, क्विकली बात कर लो जो करनी है. तो अख्तर मुनीर ने कहा कि मैं आपकी ज़िंदगी पे किताब लिखना चाहता हूँ जिसमें पिक्चर्स ज़्यादा होंगे, तो अगर आप अपनी ज़िंदगी की मुझे तस्वीर दे सकें तो मैं वो एक बुक बनाना चाहता हूँ जिसमें पिक्टोरियल बुक है आपकी बचपन से लेके अब तक. अच्छा, ये इतनी कीमती चीज़ है कि किसी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है कि अपनी सारी ज़िंदगी की तस्वीर आप दो. डिजिटल तो चीज़ें थी नहीं उस वक्त, आपको कोई DVD या कोई आपको डाटा स्टिक दे देते. तो खान साहब ने प्रॉमिस कर लिया कि अच्छा मैं आपको भिजवा दूंगा. एंड देन ही रियलाइज कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, मैं कितने एल्बम ढूंढूंगा, कहाँ से इतनी तस्वीर लाऊंगा और ये मैं अख्तर को कैसे भेजूंगा. तो उन्होंने मुनीर हुसैन को फ़ोन किया कि यार मुनीर, वो अपने अंदाज में, यार मुनीर वो बड़ा मुश्किल काम होगा मेरे लिए, वो कहाँ से मैं इतनी तस्वीरें लाऊं, उनसे कहीं कुछ और कर दे. तो उन्होंने कहा कि बेटे से बात करें. मुनीर हुसैन वाज अ गुड सेल्स पर्सन, बेटे से बात करें. तो अख्तर मुनीर ने कहा, खान साहब अगर आप कहें तो मैं लाहौर आ जाता हूँ, मैं आपकी सारी तस्वीर में से गो थ्रू होकर जो मुझे चाहिए वो ले लूंगा और मैं आपको बाकी वापस कर दूंगा. सो डिटर्मिनेशन वाज देयर. और खान साहब की आदत है कि डिटर्मिन बंदा उनके सामने चाहे बहस भी करता रहे, उसे वो पसंद बहुत करते हैं कि इस बंदे ने ये काम करना. तो खान साहब सेड कि ओके मैं तस्वीरें तुम्हें भिजवाता हूँ. थोड़े दिनों के बाद कहते हैं कि इतना बड़ा एक बैग जो है वो UPS के, क्या वहाँ कंपनी होती थी जो ये जो कोरियर कंपनी थी, वो मुनीर अखबार वतन के ऑफिस में आया जिसमें खान साहब की ज़िंदगी की सारी अहम तस्वीर थी. वो बुक बन गई, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो बुक बन गई. वो प्रिंट करने के लिए लॉन्चिंग सेरेमनी में खान साहब को कराची बुलाया गया. एंड दिस टाइम इट वाज जवारी होटल जिसमें कि ये बुक लॉन्च होनी थी अख्तर मुनीर की. अगर आप गूगल करें तो आई थिंक ये बुक आपको शायद अभी भी कहीं ना कहीं मिल जाए. तो अख्तर मुनीर को मुनीर हुसैन उनके फादर ने कहा कि बेटा एक काम करो, 1 लाख रुपए का एक चेक लिख लो और वो खान साहब को हदिया के तौर पर क्वाइटली दे देंगे, क्योंकि इस बुक से आप पैसे कमाओगे, रॉयल्टी आएगी, सारा कुछ होगा, तो हम ये खान साहब को दे देंगे. तो जब ये मिलने गए, जब लॉन्चिंग के वक्त अख्तर मुनीर ने वो 100,000 का चेक लिख के खान साहब को खामोशी से देने की कोशिश की चलते चलते. तो खान साहब ने कहा कि ये क्या, कहने लगे ये कुछ पैसे हैं, आपने मेरे साथ बुक का ताउन किया. खान साहब ने कहा नहीं, तो मेरे बच्चे की तरह बस रख, बात खत्म हो गई. उनको आफ्टर द लॉन्चिंग उनको ये आइडिया हुआ कि यार वो लाख रुपया ये दे रहा था, वो मैं हॉस्पिटल के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ. सो मना किए हुए पैसे, बात खत्म हो गई, इवेंट हो गया, तकरीब खत्म हो गई. अपने होटल के कमरे से जाके मुनीर हुसैन को फोन करते हैं, वो बेटा कहाँ, बात कराओ. तो उन्होंने कहा जी अख्तर से बात करो. अख्तर वो लाख रुपया था तुमने कहा? कहते हैं हाँ. कहते हैं लेके आओ मेरे पास फौरन. अब वो मुनीर हुसैन कहते हैं कि बड़ी अजीब थी, खान साहब ऐसा क्यों कर सकते हैं, पहले मना किया फिर 1 लाख रुपया मांग रहे हैं. और वो चेक लेके वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैंने रियलाइज नहीं किया था कि वो पैसा मैं हॉस्पिटल के लिए यूज कर सकता हूँ, तो मैं ये समझा कि तुम मुझे दे रहे हो. So the 100,000 rupees for his zaat has no meaning. उन्होंने रिफ्यूज कर दिया लेने को. और एक माँ जैसे अपने बच्चे से प्यार करती है, कहीं से उसे कोई अच्छी चीज मिलती है तो पट्टी में, पोटली में, पुड़िया में बांध के अपने बेटे के लिए ले आती है घर में कि मेरा बेटा खाएगा, ये एंजॉय करेगा. So he took that $100,000 का चेक और कहा मैं हॉस्पिटल के लिए यूज करूंगा. शर्मिंदगी नहीं हुई, एम्बैरेसमेंट नहीं हुई कि मैं वापस पैसे मांग रहा हूँ, मैं इतना बड़ा इंसान हूँ. Because hospital was so near and dear to his heart. This is how this man has built this up. और honesty का ये आलम है कि जब I'll just take 30 more seconds to share another story. कि जब कतर से पैसे लेके आया डोनेशंस, ये
394 का ज़माना है, ऑनलाइन करेंसी या ये जो क्रेडिट कार्ड इतने नहीं होते थे. सो ही वॉज गिवन अ बैग ऑफ मनी जो कतर में पाकिस्तानियों ने रेज किए थे. तो लिटरली पंजाबी में जिसे कहते हैं ना गुथली, थैला, एक बैग, उसके अंदर वो पैसा डाला हुआ था. तो खान साहब वो लेके आए थे. जब वो कराची एयरपोर्ट पे पहुंचे तो जो इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी साहब, ये उनके साथी थे, ये उनको एयरपोर्ट पे लेने आए हुए थे. तो आरिफ अलवी साहब के पास आए तो खान साहब कहते हैं, यार आरिफ तेरे पास 500 रुपया होगा? तो कहते हैं, खान साहब आपके पैसों का बैग भरा हुआ है. मुझसे क्यों मजाक कर रहे हैं? कह रहे हैं, यार ये डोनेशन के पैसे हैं, 500 रुपये टैक्सी वगैरह खाने के लिए, उधार दे दो, वापस ले लेना. सो ही टुक $500 उधार फ्रॉम आरिफ अलवी कि जो टैक्सी का और खाने का दिया जा सके, जबकि उनके हाथ में बैग था, पैसों का एक पूरा थैला था. ये जो ट्रस्ट है, ये जो ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, ट्रांसपेरेंसी है, ये उसका नतीजा है कि 40 बिलियन रुपीस पाकिस्तान में हमने पेशेंट्स पे खर्च किया है, आपका दिया हुआ, क्योंकि खान साहब की ईमानदारी पे, ट्रांसपेरेंसी पे आप ट्रस्ट करते हैं और हम सब ट्रस्ट करते हैं. ओके, मेरे पास हम थोड़ा टाइम ज़्यादा भी ले लें तो कोई बात नहीं, बिकॉज ये जो काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. लेकिन मेरे पास बहुत खुशी की ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, मैं आपको बता दूं. यू हैव एनी आइडिया हाउ मच मनी वी हैव रेज्ड, लेडीज एंड जेंटलमैन? Guess. 200,000? 200,000? आपस की बात है, अभी थोड़ा सा नीचे हैं, थोड़े से और दे दें प्लीज. 195,570. And hold on. ये मेरे पास फार्म्स हैं जो अभी उसमें शामिल नहीं है. तो those who said $200,000, you were right. Thank you so very much for doing this. And मैं जल्दी ये नाम पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने, और फिर पैसे शामिल हो जाएंगे हमारे टोटल में. I have anonymous $1,000. $6,800. Another anonymous for $1,000. $700. And this is from परमीत के गिल, $200. गिल साहब बहुत शुक्रिया आपका. $200 फ्रॉम ख्वाजा आमिर साहब, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका. एनोनिमस डोनेशन है फॉर $100. Another $100 paid by ताहिर एस चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर. नदीम आज़ाद $100. $50 फ्रॉम फरीहा अली. I have no name anonymous. हमारे पास है अमाउंट कहाँ है सर? $500. We have $250 उमर फारूक साहब. इम्तियाज आदिल साहब. We have for Karachi Hospital amount $500. Thank you. $100 मोहम्मद उस्मान गुमन साहब, बहुत शुक्रिया. We have $250 anonymous. We have another anonymous $1,000. We have $250 anonymous and another $500 anonymous. We have another जो नाम नहीं बताना चाहते, and that is $500. Ladies and gentlemen, it might sound कि हम ये क्यों कर रहे हैं, देखिए इसके पीछे एक कॉज है. नेकी के काम में कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है. एक तो ये, जिन्होंने नहीं दिया उनको हौसला, मोटिवेशन मिलती है, जिनको दिया है उन्हें इंकरेजमेंट मिलती है, और हम सबको अच्छा लगता है कि जो आज के प्रोग्राम का पर्पस है हम उसका हिस्सा बन रहे हैं. तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ये अनाउंस कर सकें आपके लिए. $500 बाई मोहम्मद यासिर साहब. रिजवान रहमान साहब $500. अब्दुल रहमान Professional Corporation $500. Nadia Khan $500. I have anonymous $600. And we have $200 anonymous. We have Gul Rahman Khan Sahab $500. गुल खान साहब हमारी टीम का हिस्सा हैं, वॉलंटियर हैं, बहुत काम किया इन्होंने. $100 बाई आज़ाद अजरा कुरैशी. इम्तियाज अहमद साहब $500. आमिर समद $100. $100 ये anonymous रखना चाहते हैं. We have another anonymous $500.
$500 माफ़ कीजिएगा, ये है मोहसिन रज़ा, और ये डोनेशन है जी $250 का, चेक भी साथ उन्होंने लगा दिया है। एंड ये है शाहीन राना। शाहीन रज़ा, माफ़ी चाहता हूँ। अफजल नज़ीर $500, $100 बाय कासिम मसरूर, आर अहमद $50, अजरा कुरैशी zakat business amount for 1 year. Can you read this? जी, $500 anonymous, $250 by Tasneem Waqar. ओके, सो ये जो नाम है अजरा कुरैशी, इन्होंने पूरे साल का किया है $300 समथिंग, सो $3,600 for this year. We have $250 by anonymous. मुश्ताक हुसैन anonymous, माफ़ी चाहता हूँ मैं इसलिए अब अमाउंट नहीं अनाउंस करता, मैंने बाद में देखा कि नहीं नाम बताना। अनदर जो नाम नहीं बताना चाहते, आलमगीर वसीम, ये कराची के लिए है $200। एनोनिमस हमारे पास है $200। ओके, हाँ नाम लिखा है लेकिन चूंकि नोट ये है कि नहीं बताना। निर्मल सहर $500, मैमूना निर्मल $250। We have anonymous $125, $500 by एक ही नाम है खान। Anonymous है हमारे पास another $250, and we have Ruxana Kalsi $250, and another unknown $1,500, and we have $750, ये भी नहीं नाम बताना चाहते। Okay, we have another announcements to donation के बारे में। मुझे उस्मान अगर आप टोटल जल्दी से बता सकें। जुनेद माहून साहब $1,000, we have नवीद भट्ट साहब $200, मोइन पाशा $200, आलम नसीर $500, असलम नसीर $500, हबीब अब्दुल्ला साहब $600, तहमीना मुनाफ $500. And let's do it all together, ladies and gentlemen. Okay, so we have $100 by Ghulam Abbas. We have anonymous $600. We have $350 anonymous. We have $20 anonymous here, Mrs. Shiza Wasim. We have $500 by Nabila Wasim and Wasim Sheikh. We have Khalil Kurbani sahab $100. We have ye anonymous $100. $200 ये फॉर्म कंप्लीट नहीं है सर, इसका हमें नाम चाहिए, पहले नाम और इंफॉर्मेशन चाहिए। नाम नहीं लेना, ठीक है। और ये $200 हैं जी। उसके बाद $100 हैं मोमिना काजी। 7 years old, the youngest donor in the room, ladies and gentlemen, Mahira or Mirha, $50. Okay, so हमारा सिर्फ एक स्टेप और है कि हमारे पास खान साहब का साइन किया हुआ बैग बॉल वॉलंटियर अगर मेरे साथ कोई स्टेज पे लेके आ जाए, एंड वी हैव दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग पेंटिंग जो हमने यहाँ पर ऑक्शन करनी है और उसके साथ ये कंक्लूड करेंगे हम लोग। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बता दूं that you should be very proud of yourself. Last year हमने इसी हॉल के अंदर $204,000 जमा किए थे, and we have surpassed, ladies and gentlemen, $211,000 so far.
ओके सो ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कैलगरी की तारीफ़ें मैं सुन के आया हूँ मुख्तलिफ शहरों से, उसमें एक तारीफ़ ये थी कि कैलगरी बीट करता है, और बीट करने से हम 225 से 211 निकालने से कितने हैं 13, we need minimum $13,000 to beat and lead Western Canada. 13,000 हो जाए तो हम वैंकूवर को बीट कर देंगे, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि अभी डोनेशंस आ रहे हैं और हमारे पास कुछ ऑप्शंस है यहाँ पर कि हम बीट कर देंगे वैंकूवर को. ओके सो दिस इज अ पेंटिंग बाय सलमा बाजी. आप सब उनको जानते हैं, मीडिया से भी मुंसलिक हैं, कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहती हैं, वॉलंटियर करती हैं. उन्होंने मुझे सख्ती से कहा था कि मुझे स्टेज पे आज आप नहीं बुलाएंगे, तो मैं इसलिए उन्हें स्टेज पे नहीं बुला रहा. और उनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट लोकल आर्टिस्ट जो हमारे इस खिते में, इस एरिया में है. ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कैलीग्राफी उनकी. ज़ाहिर है ये आयात हैं, इनकी कोई प्राइसलेस चीज़ें हैं, इसको हम कुछ ऑप्शन के लिए प्राइस तो नहीं रख सकते, बट जस्ट लुक एट द नफासत, द क्वालिटी, और जितना खूबसूरत काम उन्होंने किया है इस पे. पूरा नाम क्या है? ओके सो मैं माफ़ी चाहता हूँ. वसीमा बाजी की पेंटिंग अभी हमारे पास है. ये सुमेरा का लास्ट नेम मुझे अभी बताया गया. ये हमारी कोई लोकल आर्टिस्ट है सुमेरा. I'll just find out the last name, मैं आपको अभी बताता हूँ. ये उनकी तरफ से हमें डोनेशन मिला है. यही मेरा प्लान था. That's what I wanted to do. So ये एक पेंटिंग और एक पेंटिंग हमारे पास, ये जो आर्ट वर्क यहाँ पर है, this one right here, और this one ladies and gentlemen. ये ओरिजिनल पीस है, हाथ से बनाया गया, रेप्लिका नहीं है, और हमारी लोकल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपके लिए बनाया. इसकी तरफ हम आएंगे विद इन फ्यू मिनट्स. उससे पहले हम ये करने लगे हैं कि खान साहब का जो साइन किया हुआ बैट और 2 गेंदें हैं, 2 बॉल हैं क्रिकेट के, जिसको हम यहाँ पर ऑक्शन करेंगे. एंड ये ले आइए आप डॉक्टर साहब, ये बैट डालिए जी. मैं क्विकली आपको अनाउंसमेंट्स कर दूं कि मेरे पास है, यहाँ पर नाम नहीं लिखा, लेकिन $250 का डोनेशन है ये. डॉक्टर साहब इसके लिए हमें नाम चाहिए. ये ई ट्रांसफर शायद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नाम मिसिंग है. उसके बाद वी हैव $1,000, ये एनोनिमस नहीं है. अभियान शौकत $1,000, wonderful, thank you. Anonymous donation है $500 का. Ladies and gentlemen, we have another $500 anonymous. We have $250 by Sayyid Shirazi. Okay, and we have Umar Wakar, Mrs. Makbul, for mother Mrs. Makbul Begum, $100. बहुत बहुत शुक्रिया, thank you so very much. अब ये बैट है. हम टाइम जितना सेव करना चाहते हैं वो जल्दी करना चाहते हैं ताकि कंटिन्यू रहे प्रोग्राम. इसलिए हम इसको जितना जल्दी ऑक्शन कर सकें हमारे लिए आसानी हो जाएगी. देखिए, एक्सक्यूज मी जर्नल, आपकी सिर्फ 3-4 मिनट और चाहिए. यू हैव बीन अ सुपर ऑडियंस शाम से, और बहुत आपने तवज्जो से हमारा साथ दिया और जनरसली पैसे दिए हैं. तो अगर 2-3 मिनट 4 मिनट आपके और मिल जाएं तो बहुत बहुत आपकी मेहरबानी होगी. देखिए ये बैट है और इसकी मार्केट में प्राइस $500,000 हो सकती है, पर इसकी क्या खास बात है कि हम ये आपको यहाँ ऑक्शन करना चाहते हैं. और क्यों खास बात है कि हम ये बैट कल एडमिंटन में $18,000 में बेच पाए थे. क्या रीजन हो सकती है इसकी एक रीजन है जिसको हम अपनी देसी जबान में कहते हैं कि इसके साथ एक निस्बत जुड़ी हुई है, और वो निस्बत आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की है. हम सब अपने घरों में देखते हैं, और मेरे अपने घर की भी एग्जाम्पल है. माई ब्रदर वॉज इन UK फॉर वेरी लॉन्ग, और मेरी वालिदा क्या करती थी कि उनके कमीज को सूंघती थी. जब बेटे की याद आती थी तो अक्सर उनकी कमीज को सूंघती थी, या उनकी किताबों वाले कमरे में जाके किताबों को टच करती थी. और ये हर माँ का काम है, ये सिर्फ मेरी माँ वालिदा का नहीं है. क्यों आपको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जिनसे निस्बत जुड़ी होती है? वो जगह,
वो कमरे, वो रास्ते, वो पगडंडियाँ, वो बातें आपको अच्छी लगती हैं बिकॉज आपके प्यारे उसके साथ जुड़े होते हैं. एंड दैट इज व्हाट मेक्स दिस बैट अ वेरी वेरी स्पेशल बैट, क्योंकि इसके साथ इमरान खान साहब की निस्बत है. द इमरान खान साहब जिसकी हम शाम से यहाँ पर बात कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई दिस इज प्राइसलेस. ये आप बाहर से $500 में खरीद सकते हैं, बट वी जस्ट सोल्ड वन इन एडमिंटन yesterday for $18,000 and we sold for $12,000 in Vancouver. So हमारा जो चेरी ऑन द केक था ना, आइसिंग ऑन द केक, वो बैट था जिसने हमारे फंडिंग को काफी हेल्प कर दी थी एंड में. ये इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नंबर है. शौकत खानम के रैकेट में ये नंबर है, इसके ऑथेंटिक होने का, रियल होने का. ये इसके साथ एक लेटर है, और ये जब भी कभी जिंदगी में आप या आपके बच्चे कभी बात करें कि ये हमने ओरिजिनली कहाँ से लिया था, और कभी फ्यूचर में शौकत खानम के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट से आप चेक करना चाहें तो आप ये नंबर से चेक कर सकते हैं दैट दिस इज द ओरिजिनल बैग जो कि साइंड बाय ग्रेट इमरान खान साहब. सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड. सो आई स्टार्टेड विद द वर्ड निस्बत. ये जो निस्बतें होती हैं ना, ये जो कनेक्शन है, ये जुड़े होते हैं आपके दिल के साथ. जब कोई भी निस्बत आ जाती है तो प्राइसलेस हो जाती है चीज़, चाहे वो आपको बाजार में जितनी भी चीज़ की मिल जाए. हम छोटी छोटी चीज़ें संभाल के ज़िंदगी में इसलिए रखते हैं बार बार कि उनके साथ चीज़ें जुड़ी होती हैं. सो दिस इज़ द बैट लेडीज एंड जेंटलमैन. आई वुड लाइक टू ऑक्शन दिस, और मैक्सिमम जो भी हम डोनेशन आपसे ले सकें, जो भी इस हॉल में मौजूद दे सके. सो इस बैट का जो ऑक्शन है वो हम शुरू कर रहे हैं $5,000. एक बैट है हमारे पास, ये $5,000 जो इसकी स्टार्टिंग ऑक्शन है, प्राइस है, हमने रखी है. एनीबडी इन द हॉल हु कुड गिव अस $6,000 फॉर शौकत खानम हॉस्पिटल. आपकी चैरिटी, नेकी, सारा कुछ वैसे रहेगा, पर उसके साथ आपको ये बैट मिल जाएगा. $5,000 फ्रॉम दिस टेबल लेडीज एंड जेंटलमैन. ये नहीं, 5,000 तो मैंने कहा था सर, आप मुझे थोड़ा इमोशनल कर दिए ज्यादा आपने. मुझे $6,000 चाहिए. Okay, so $5,000 is the base price for auction. Anybody gives me $6,000 for this one. So get this back. $6,000. And this brother is from Turkey. You said from Turkey, brother? क्या ड्रामा के नाम है जो देख देख के हम Ertuğrul. So he's from the land of Ertuğrul, and you know the two countries in the world, Malaysia and Turkey. Imran Khan Sahab, when he was Prime Minister, he would talk about Turkey and Malaysia very passionately, always. $6,000 from this table. Okay, hold on, please बहन आप hold on रखिए. $6,000. Can I please get $7,000? $7,000 for this bag जो आप अपने लिविंग में, अपनी स्टडी में, जहां भी आप इसे सजाना चाहें, रखना चाहें, आप इसे रख सकते हैं. आपकी चैरिटी में, आपकी नेकी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Sorry, my sir. So $7,000. Do I have somebody who would pay $7,000 for this bag? $7,000. देखिए बहुत कम पैसे हैं, मैं देना चाहता हूं, पर seriously we have sold this for $10,000 earlier, I think last year in this hall. $7,000. Anyone interested to donate $7,000 for Shaukat Khanum Hospital for this bag? Dr. Amir Islam, आप स्टेज पे आइए प्लीज. तारिक भाई आप भी आ जाइए. I'm having difficulty to close the sale here. So we need some donation for this bag. I have an offer for $6,000. We got a $7,000 on that table. Sorry, क्या? $7,000? $7,000. Okay, अब seriously खाना खाना चाहते हैं, भूख हमें भी बहुत लगी है, but can I jump from $7,000 to $10,000 and let's wrap it up? $7,000. Do I have $8,000? $8,000.
We got $8,000 from this table. $8,000. $8,000 one. $8,000 two. $8,000 two. $8,000 three. आप प्लीज आइए, स्टेज पे आइए। प्लीज आप कोई फैमिली मेंबर या आपकी टेबल से अगर आप किसी को नॉमिनेट कर दें, we would like to have somebody here for the picture और आपको ये हैंड ओवर हम कर सकें। आपका नाम क्या सर? ये माइक में जरा जमान मलिक साहब। बहन आपका क्या नाम है? शहजादी जमान। आप इस तरफ आ जाइए, तारिक भाई आप भी इस तरफ आ जाइए। If I could request Dr. Roya to join us on the stage, and Murtaza Ansari साहब if you could come, and Mohammed Yasin साहब if you could come on the stage please. So this bag $10,000 कितना हुआ था बात सॉरी हमारी? $8,000। ये क्या करें, ये नई आदत जाती to maximize the funding for Shaukat Khanum Cancer Hospital. I would have been seriously super happy for $10,000, but we really appreciate कि आपने 8,000 ऑफर किया है, and अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। देखिए ये बैट तो एक सिंबॉलिक चीज़ है, एक निस्बत की बात मैंने की है। The real difference is जो आपने $8,000 हॉस्पिटल को देने हैं, तो ये बैट आपके हवाले किया जाता है। If we could have Mariam right there. Okay. Hi डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप यासिन भाई थोड़ा सा आगे हो जाइए so we can have पिक्चर में सारे दोस्त आ जाएं जी। थैंक यू। और ये बात आपका हुआ, ये आपके साथ जाएगा जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। Give them a round of applause ladies and gentlemen. Okay, so we're gonna give you the balls. Should we do both of them? Okay, आप यहीं रहिएगा जी, दोनों दे दीजिए। आप अमर भाई इधर ही रहिएगा। And जी। Okay, so meanwhile हमारी जो वॉलंटियर टीम थी वो टोटल करने में कामयाब हो गई है, and ladies and gentlemen, we have surpassed any city in Western Canada. We have raised $226,000. And we all should be, and you should be very proud of yourself that we kept the history जो हमारी कैलगरी की है, generous जो donation देने की वो हमने continue रखी है, and I'm sure कि कुछ donations अभी count नहीं हुए हैं और वो भी हो जाएंगे by the time हम finish करेंगे, ये और भी नंबर ऊपर चला जाएगा। ये दो बॉल हैं जैसे मैंने बात की थी पहले, ये बैट के साथ आए हैं, it has an IP number, और ये शौकत ये खान साहब के ओरिजिनल इस पे सिग्नेचर है, and ये दोनों की हम एक ऑप्शन रखना चाहते हैं $2,000 each. So because हम running out of time, so हम जितने minimum time में कोई ऑप्शन के लिए कोई ऑफर हमें दे दे, we will be very happy to give it to you, and this is just a souvenir to take जो आप अपने घर में डिस्प्ले कर सकते हैं, रख सकते हैं। $2,000 each. And real जो क्रिकेट के बॉल हैं वो हैं, but what makes it special is that it's signed by Khansa. $2,000 from brother from Turkey. Okay, so we got offer from our brother from Turkey, $2,000. So $2,000 one, $2,000 two, $2,000 three. Are you please come on the stage?
Okay, so I have a second one as well. So that is also for $2,000 and we have to give it away. This souvenir hai. Do I have anybody in the hall जो कि $2,000 इसके pay करेंगे? Mir Saab, Dr. Mir Saab, thank you sir. $2,000, one for Dr. Mir Saab, two. If anybody is interested, 2,000, 2,000, 3,000. Oh, we got 3,000? Oh, wonderful. So, Misa, we got $3,000 offer here. Oh, he wants, you already got one. Yeah, no, I want to give it back so that it goes back. Okay. So the brother from Turkey, brother, can I please get your name? Talha. So brother Talha, please join us for a second. So brother Talha is from Turkey. So he said he will donate $2,000, but he would give the ball back so somebody else can buy and we can have more money. So Mir Saab, so Dr. Mir Saab ka ek ball ho gaya $2,000 ka. Brother Talha said that we can auction this ball again. So we'll start again from $2,000. Can I have $2,500 for this one? We have to do it because he's donating it, so we obviously don't want the same amount of money. Do I have a donor in the room who could give me $2,500 for this one? $2,500. Shiraz, 25. Shiraz? Yeah. $2,500 one for Shiraz. Usman ke brother hai ye. He's also our sponsor. He's our sponsor. So $2,500 one, I see $2,500 two. I see a 3,000 over here. Do we have 3,000? 2,500 over here. three. So it's gone. आइए उस्मान बुलाइए भाई को. This man is after your job. जी. So हम आपको we'll take a picture. Sorry, it's not, you can join us here. So please, आसिफ भाई आप आइए, डॉक्टर अवान आप आइए, मोहम्मद यासिन साहब आप आ जाइए एक सेकंड के लिए प्लीज. जी. Should we invite anybody else? Mazhar bhai, Mazhar Malik sahab, if you're around, if you could join us on the stage, please. जी. फरहत हैदरी साहब, आप प्लीज आइए एक सेकंड, भी आप इधर से आ जाइए. So ये दो बॉल, एक मीर साहब को जा रही है, डॉक्टर मीर को, और एक उस्मान चौधरी साहब के जो भाई हैं, जो उनकी लॉ फर्म है, वो हमारी स्पॉन्सर भी है आज. उनके भाई ने $2,500 के ये ले लिए. So this is the first. So brother from Turkey, from the land of Ertugrul. Okay, so that is for him, and he's donating for Shaukat Khanum Cancer Hospital. And the second one is for भाई का नाम क्या है? Sorry, I'm missing your brother's name. Asad Mir sir, ठीक है. Dr. Asad Mir sir, बहुत बहुत शुक्रिया sir. Thank you so very much for doing this. Thank you, Janet. And Mir Saab also donated $10,000 earlier. So he has been really superb throughout the evening. Thank you, Mir Saab. Thank you. Please have a seat, Janet. Thank you. Okay, so now we have the last. Yeah, not sure. So, अब यहीं रुकिए. So this is the painting. You all can see, ladies and gentlemen. इसका donate किया है, and I'm still waiting for the full name for the artist who has donated this. मुझे प्लीज अगर कोई वॉलंटियर बता सके उनका पूरा नाम. And if she's around, I would love to have her on the stage for a second, please. इसकी let me ask Dr. Aslam that how much we should start with. I mean, it's a priceless item, but it's just. Sumaira Asim, she's a local artist और ये उन्होंने अपने हाथ से बनाई है. And I would like to know from Dr. Aslam कितने से शुरू करें हम सर इसको. And like I said, it's a priceless item, so the money really is just for the donation. It does not mean कि ये कुरान की आयत इतने की हैं. So we would like to start it from $1,000. $1,000 for this beautiful original painting done by one of our local artists in Calgary. $1,000.
$1,200. $1,200 from Brother Tala from Turkey. Turkey is beating us big time right now in auction. So Brother Tala, who just bought a ball, he said he would like to give $1,200 for this one. $1,200 one. $1,200 two. Come on, someone go 1,500. Come on. $1,200 three. Okay, so please join us for a second again, so we can hand over this one. Okay, so I will leave it here, and then at the end you can take with the stand. Yeah. I will wait 1 second. This is done by Salma Baji. I think so. And I think Fizbai was involved. He paid for this one? Something like that? 3 of them. Okay. Okay. So this is also by Sumaira Asam और Mohammad Hafiz Malik साहब volunteer भी हैं Shaukat Khanum के. He's the president now for Pakistan Canada Association. He has paid some money to the artists कि ये हमारे लिए auction करने के लिए वो ले सकें. तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया gentlemen for doing this. And this little beautiful piece here, we would like to ask for $1,000. $1,000. This is a very little cute priceless piece. $1,000. Amir, you have to use your influence to $1,000 for this piece. We got $1,000 from the table. Naam kya hai bhai aapka? Could we get your name please? Tausif Chugtai sir. Please aaye sir. $1,000 one, two, 1,003 for Tausif Chugtai sir. Sir, we will have it here by the stage, so later on, आपको हम hand over कर देंगे ये. We got the last one. जी. And this is another local artist जिन्होंने ये बनाई है यहाँ पर, और हफीज़ मलिक साहब ने इसको हम इस auction के लिए arrange किया है. And we will start from $1,000 again. $1,000. देखिए, we know we're running out of time, and my apologies कि हम कोशिश करें जितना जल्दी इसको conclude कर दें. This is the last. We have just one more painting after this, and we'll be done with the fundraising, and we'll give you the total जितना हमारा grand total अब तक हुआ है. $1,000 for this painting, ladies and gentlemen. It's a priceless piece, but it's a donation money. If anybody is interested to donate $1,000, we would love to give this painting that can go with you. $1,000. Do we have anybody in the hall for $1,000? Muhammad Khalid Sahab. And Muhammad Khalid is extremely dedicated team member. हमारे इस team का हिस्सा हैं, volunteer हैं. $1,000 one, two, three, gone. And this is the last piece, ladies and gentlemen. आयतुल कुर्सी है, and ये सलमा बाजी ने बनाई है. Is that right? No, वही है ये. Which one? Okay, ठीक है. तो कोई details इस पे नहीं, but anyways, this is done by Sumaira, and $1,000 for this one. $1,000 will go towards donation.
बट आपको ये ब्यूटीफुल पेंटिंग मिल जाएगी जो आप अपने घर में जहाँ भी आप इसे सजाना चाहें, लगाना चाहें। एंड दिस इज एन ओरिजिनल पीस, ज़ाहिर है लोकल आर्टिस्ट ने बनाया है, तो ये स्टोर पे या किसी प्रिंटर पे नहीं बनी है। वी हैव $1,000 फ्रॉम दैट टेबल। कैन आई प्लीज गेट वन? तारिक if they're right, Tariq Hussain Saab. Tariq Hussain Saab got it for $1,000. 1,001, 2, 3. Gone. We're done. And I need a final number, please. As fast as I could. जी नहीं, अब टाइम नहीं, हम कर नहीं पाएंगे। वी हैव okay, so ladies and gentlemen, that was the part of the most important part of the event. I'm just waiting for a few seconds to get the final number, but meanwhile, the volunteers are working to get the final total of the donation for the evening. इस मौके पे for a vote of thanks before we go towards the dinner, and after the dinner we have musical program. मैं इस वक्त आपके सामने बुलाना चाहूँगा हमारी टीम के एक्स लीड हैं, अब भी टीम में उतना इन्वॉल्व हैं, आप सब उनको जानते हैं, उनके डोनेशन को, काम को, शाम से वो आपको हमारे आसपास नजर आ रहे हैं। बट जस्ट those who do not, I have his introduction. He's a family physician in Calgary since 2004, fellow with the College of Family Physicians of Canada, ex-chair team Shaukat Khanum Calgary for 3 years, founding president Apna Alberta chapter. He's actively engaged and supports multiple community projects. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. Tariq Awan. Thank you so much, Shan Bhai, for kind introduction. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Alhamdulillah, together we have made the difference in beating cancer. And tonight, the success of this program speaks for itself. For the thank you note, I think on behalf of all of us and Team Shaukat Khanum Calgary, we start with the person who has given us these iconic institutions in Pakistan where 75% of the patients receive free cancer treatment indiscriminately. I repeat, indiscriminately. So those institutions are for all Pakistanis. So our nation will always remain indebted to Imran Khan. May Allah subhanahu wa ta'ala help him, protect him, who has dedicated his life for Pakistan and Pakistani people. Big round of applause for Imran Khan, please. Thank you so much. Next, great appreciation for all of us sitting here and who have supported this worthy cause tonight, our donors, sponsors, media, our dignitaries, our supporters and all the well-wishers of Shaukat Khanum Hospitals. This is now about 6 years that we are having these annual fundraisers, and Alhamdulillah we have, under the leadership of Amir Aslam, lifted the level of donation, and you have witnessed it tonight. And I am just going to request a big round of applause for Team Shaukat Khanum Calgary under the able leadership of Amir Aslam. Also, I would like to thank you, Dr. Asif Loya, all the way from Pakistan. Thank you so much for a great presentation and the update. Surf Canada, Murtaza Ansari Sahib, and our dignitary Muhammad Yasin Sahib, who is a Minister of Immigration Multicultural, and he has always graces our community events for
any good causes. I would like to mention that Dr. Amir Aslam, who is the lead for our program and the team, and how he has lifted the level in our community is in collaboration, especially in media, where he has made this name so popular into the community in collaboration with media personnel like Abid Khan, Jalal Ladar, and Sajjad Mirza, Ghulam Mustafa Saib, and sorry if I'm missing any name. Last but not the least, I would like to thank my family, Abdullah and Talha, and my loving wife Sadia for unwavering support and love for all the good work we do together. Thank you so much, Sadia. I know that it has been a Sunday night and long night, so to keep it simple and short, I would love to actually appreciate individual volunteer of our team members, but I would rather call upon the Shaukat Khanum team volunteers will take a collective picture and recognition first for the organizers, and then our youth volunteer can join for the picture. So may I request the organizers, I will call upon So I would like to start with our team lead, Dr. Amir Aslam, to please come on the stage. Imtiaz Ahmed, lead for sponsorship committee. I would like to request also Gul Khan Sahib, Mazhar Malik, Khurshid Alam Sandhu to come to the stage, please. For food committee, the lead is Muhammad Khalid and Imran Khan. Social media, it's Abid Khan and Rana Sadwat Saab. IT and Tech, Usman Chaudhary is the lead. And I would like to also request Zainab Malik and Areej Shamim. Tickets and accounts, Shabana Shehzad is the lead, and Adnan Zishan and Junaid Mahoon, I think he's not attending today for some reason. The decor is Rahila Jameel, she's the lead, Shabana Shehzad and Afshan Arshad. For volunteer, again it's Zainab Malik and Rana Sadwat Saab, Wajahat Firoz and Rahila Jameel for guest committee. Musical and instrumental technical writer Shan Ali, Imran Khan, and last but not the least our MCs, of course our Calgary Kishan Shan and Ahmed Zishan and Rahila Jameel. Can you all please come to the front for a picture? I think we should go fast because we have been taking too long, and we'll appreciate for a picture. Meanwhile, Dr. Sahab, this जो operation ये continue रहेगा. I'll take 30 seconds to announce the final numbers, ladies and gentlemen. For the total donations we have collected tonight, pledges we have collected tonight, it is a number we should all be very, very proud of, and that is $252,000. So we will continue with the rest of the program. Our MC will announce the table numbers for the dinner, and then we'll have volunteers and organizers की pictures यहाँ पर ये साथ-साथ चलती रहेंगी. आपका बहुत शुक्रिया for now. I will see you after the dinner with the musical side of the program. Thank you so very much for doing this, and let's give a huge round of applause for this mind-boggling number, $250,000, ladies and gentlemen.
if I could take a second, जिन दोस्तों ने पेंटिंग्स खरीदी हैं ये जो हम यहाँ पर कर रहे थे, अगर वो हमारी यहाँ वॉलंटियर्स जो टीम है स्टेशन है यहाँ पर कांटेक्ट कर सकें. I know तारिक हुसैन भाई and there were तौसीफ साहब and then there was another gentleman. अगर आप उनसे कांटेक्ट कर लें ताकि जो फॉर्म है वो भर लें and plus they can explain you कि आप पेंटिंग आप कब उठा सकते हैं ले जा सकते हैं. Thank you for this and just wait for a moment and Adnan is going to announce the table numbers for the dinners, ladies and gentlemen. Thank you very much. Let's start. Let's get this party started. So I will announce the table. From table 1 to table 6, please proceed to the table. 1 to 6. And then table 31 to 36, please proceed to the dinner tables, please. 1 to 6 and 31 to 36. I will be going fast. Sorry, it already has been a little late tonight, so please hurry up. Then other tables get a chance. 1 to 6. Miss Zainab and all the volunteers, youth volunteers, please come to the stage for the pictures, please. Thank you very much for all the hard work that you have rendered tonight. Really appreciate your work. Miss Zainab and all the volunteers, youth volunteers, please. Youth volunteers come to the stage. Thank you. आप लोगों की ताबत से ही इस वक्त Miss Zainab, please, can you come to the stage? वो तो सारे yeah, no, they keep investing in the workout and the growth mostly. Thank you very much. Going fast at the dinner table. I will be announcing few more shortly. The protection again. Right? हाँ प्राइस सपोर्ट कर रहे हैं वो ये बात है कि वो टॉपिक आने वाला है अब वो जो कहते हैं ना दवा की आगे सब दवा तो कर ली हुई है अब लोगों की जरूरत रहेगी कोई नहीं अल्लाह वाले ये तो अच्छा लोगों को ये बनाने से तो वो निकलेंगे थोड़ी और निकलेंगे जब कंसोलिडेट करते हैं देन ले ऑफ करते हैं राइट सो एक्चुअली दे आर डूइंग रिवर्स सो देन देयर आर मोर राइट वो तो सनकोर का चल रहा था कि ले ऑफ राइट वो लोग सब सारे स्टेट्स में दे रहे थे वहाँ पे आप ये खत्म हो गया मोस्टली डन हो गया एक लास्ट I would like to announce few more tables now. Table 11, 12.
And table 2122. Table 1112, table 2122. Please proceed to the dinner table. नहीं वो डिपेंड करता है अभी भी वो डिपेंड करता है प्राइस पे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो 3 लाख वाले अपार्टमेंट है कहते हैं कल जिसके ना आज चारों ऑफर आ गए. Another donation just came for $500 from Mr. Afzal. Afzal Ahmed, thank you very much for your contribution. May Allah reward you with this kind of help. They don't get interested here. लेकिन अब बाकी सब पॉजिटिव लगता है. नेगेटिव इम्पैक्ट जो चीज़ हो सकती है वो सिर्फ ये है कि जो इंडिया कर रहा है राइट, जो वो आपके डेवलपमेंट दिखा रहा है तो उससे देख रहे हैं कि इंडिया से इमिग्रेशन कितनी कम हो जाएगी, क्योंकि वो फोर्स इमिग्रेशन आज कभी नहीं है स्टूडेंट्स आर राइट, तो उनकी वजह से पॉपुलेशन जल्दी से बढ़ गई. तो आप ये देखोगे उससे क्या होता है, आएगी तो पहले उधर आएगी ना टोरंटो में और वैंकूवर में राइट, यहाँ का फिर इधर भी देख लें कोई आप प्लेट हाथ में आ गई बड़ी मुश्किल से खाना मिला. सही है भाई. और वही कह रहे हैं इनको खाना मिल गया इधर उधर नहीं देख रही. नहीं चाहिए अगर मिल गया तो असल में बात है हम लोग भी चले गए यहाँ पे ये ट्रेडिशन है यहाँ पे ये टेबल बोलते हैं लेकिन सब चले जाते हैं. हाँ नहीं मुझे पता है ये यहाँ पे क्योंकि वो लाइन लंबी लगती जाएगी तो जहाज में मारी जाएगी राइट.
हमारे साथ सभी Should I send couple more? Table 13, 14, 15, table 23, 24, 25, please proceed. I guess everyone is welcome to go and get the food.